Hey guys, welcome to this video. In this video, we will be talking about TCS NQT 2027 preparation. And this video is very important for all of you because this is a one shot video. And in this one shot video, I am providing you the compilation of 2026 batch actual exam solutions. Okay. So basically in this video, what you can expect. So TCS NQT is conducted in 2026. Okay, and in this TCS NQT, actually many shifts, the coding questions were medium to hard. Okay, were medium to hard. And in this video, I will be providing you the compilation of the all solution. Please keep this in your mind that in the solution videos, the introductions and the promotions will be very repetitive because this video is the compilation. This is the compilation of different videos of the solutions which TCS asked this year, and we recorded the solutions on the same day. In this video, I am combining all the videos of the solution and I am providing you the one shot solution video for all the coding question. Yes, the introduction and the promotions can be repetitive, but you can use this video because in this video, the actual questions which got asked in 2026, we will be solving in this one complete video. Make sure to like this video. I am expecting at least 500 likes on this video. Also, you will be getting the link of the mock test series in the description for your 2027 preparation, in which it is very important that you start your preparation as soon as possible. You can purchase this course, and as soon as possible, you can start your preparation. Please join the WhatsApp group for 2027 batch. Also, start with the daily practice coding sheets and the mock test paper. Let's start with the compilation video. Let's start. Hello my dear students. So in this video we will be solving TCS first shift exam coding question. It was the second coding question which was medium level asked by TCS NQT today. Okay, so many candidates actually passed the 7 by 7 test cases, but I just wanted to clarify one thing, that in today's exam I have not seen the exam from my eyes, right? So this question one student told me on the call, so I have written the exact question what he had told me on the call. So I am solving the question based on the inputs of the candidate. I have not seen the exact question, but this was the candidate who told me this question. Okay, and if someone who have given today's exam, you can tell me in the comment section if it was same or not, because whatever the candidate told me, I am solving that question. Okay, so basically this was the question which got asked. I will be discussing each and every aspect. Don't worry about it. Make sure to like this video, make sure to subscribe this channel, because we will be discussing a lot of things about TCS NQT on this channel. Also, if you have your exam on 26 or whatever you want to prepare, so see, today's exam was the exact photocopy of the live test which we are providing. Okay, so ignore everything, just go for the live test. The live test which we have provided here, a lot of live tests are there which you can use for your practice. Okay, reasoning and verbal is coming almost same which we are providing. Numeric is also almost same, okay, which we are providing in the test. Numeric is coming hard, verbal is medium level, and reasoning is also coming like easy to medium, but like you will easily do verbal and reasoning, that's my guarantee. Okay, for numeric only it is little bit hard which is coming. Okay, that also you will do because the cutoff will be less in that. Okay, we have already provided the live test in which the questions are of TCS level only. Okay, so let's talk about this. Okay, you are given n bank transaction. Each transaction has sender receiver amount timestamp. A transaction is considered fraud if sender receiver and amount are same. Timestamp difference is less than or equals to 60 seconds. Find and print all such fraud transactions. Okay, so this is the question which student told me. The example input is given here. So let's talk about this. Okay, so basically what this question is saying, okay, we are given the n bank transactions. Okay, n bank transactions will be there. So the value of n is given. Okay, we need to take the n transactions. Okay, now each transaction has three things: sender, receiver, amount, and timestamp. Okay, so first one here, Anu. So Anu is sender. Okay, John is receiver. Okay, this is the amount like 200. Okay, and this is the timestamp like 1000. Okay, this is the timestamp. Okay, these four things they have provided us. Okay, first of all we need to take input of these four things: sender, receiver, amount, and
timestamp. Okay. A transaction is considered fraud if the sender receiver amounts are same or the timestamp difference is less than equals to 60 seconds. Find and print all the fraud transactions. Okay. So if you will see this closely, see the first transaction and second transaction. The sender name is same, the receiver name is same, the amount is same, and the time difference, if you will see here, is less than 60 seconds, right? It is 1000, it is 1050. So it's a fraud transaction. Both are fraud. Okay. Next one, this Ram Sam 300 2000. Okay. Again, this is Ram Sam 3000 302 2050. Again, both same. Okay, the time difference, if you will see, is less than equals to 60, right? So that's why it is also fraud. Only transaction is this one. If you will look closely here, Anu John 200.50 and 2000, this is a legit transaction, because if you will see, there is no duplicate transactions, there is no transaction with less than 60 seconds difference. Okay, and everything is fine here. So only if you will see, this is the legit transaction. Now I don't know what we need to print in the output, maybe the fraud transaction, so I am printing here the fraud transactions in the output. Okay, in the actual exam, but this was the question. Okay, now how will we will be doing this question? There are total two aspects. The first thing, we need to take the input. Okay, if the input is given like this, you can take the input in two styles, right? So first one, I am assuming they are providing the input in the right manner. Okay, if they are providing the input in the right manner, what we can do is we can build a structure for this kind of input. Okay, first thing is this. Suppose they are providing this in the string. So suppose the input is provided as a string, then also we have discussed about it, right? What we will do is, see, we will create a variable. Okay, that is first is suppose string sender, second one string receiver, third one we can create double amount. Okay, another one we can create double timestamp. Okay, so these four variables we will create, and suppose this is the string, right? We will split this string based on spaces. We will split the string based on spaces, and after that, the first one we will store in sender, second one we will store in receiver, third one we will store in amount, and fourth one we will be storing in timestamp. So these kind of like four variables we can create. Okay, these kind of four variables we can create, and whatever we are getting in the input, we can one by one split them. Okay, we can store them in different like strings. Then after that, we can create a separate arrays for these, right? This is the sender, this is the receiver, this kind of separate arrays we can create, but it will create a complicated, I think it will create a complicated structure. So I think the better thing is, after splitting the input, directly don't store them in the individual variables. We can create a structure for that. Okay, the same kind of a structure we can create. Okay, so if you know how to create the structures, if you are using C++, Java, or whatever language you are using, I think this question will be easy to you. Okay, so let's start. First of all, we create the structure in C++. Okay, one structure we are creating, that is transaction. Okay, in transaction we are storing sender name, receiver name as a string. In the double we are storing the amount, and in the long we are storing the time. Okay, whatever based on the constants you can take the variables. Okay, after that we are taking the input of n, the number of transactions. Okay, after taking the number of transactions, we are creating one vector transaction. Okay, in this vector transaction, what we are storing, we are basically storing, if you can see here, we are taking the input. Okay, so after taking the input, this is the vector of transaction type. The name is t. Okay, so in this t vector, the type, if you are seeing here, we have provided as transaction. So the type is this one, which is transaction structure, right? It will be having sender, receiver, amount, and time. Okay, these four things will be there in this structure, in this array. Okay, so we are taking the input. In the input, first of all, we are storing the sender name.
then we are storing the receiver name, then we are storing the amount, and then we are storing in that time. So suppose this is the input, which is Anu, John, 200 and 1000. Suppose this is our input. So first of all, we are storing in T of I dot sender. So the first one, which is Anu, that will be stored in sender. Second one is John, it will be stored in receiver. Third one is 200, which will be stored in amount. Fourth one is 1000, which we will store in time. So our input is there in vector t. Okay. So after storing that, our vector t will be looking like this. Okay. There will be sender here, receiver here, amount here, and there will be transaction here, and there will be some columns. So this kind of structure will be there. In the sender it will be Anu, then there will, in the receiver it will be John, in the amount it will be 200, in the timestamp it will be 1000. This kind of structure will be there, and more inputs we will be taking, the more structures we will be storing like this only. And this will be T of 0, then for T of 1 also it will be the same structure with the different values. Okay. Then we are creating one vector which is fraud. Okay, in this vector basically it's a boolean vector in which we will be storing if the transaction is fraud or not. Okay, then what we need to do is we need to compare all the transactions. See, I am not doing the optimization here. Why? Because I think the optimization is not needed in the question. Okay, if it was needed, I will create one separate question and I will provide the optimized code. But I think without optimized code was working in this, like two loop code was working here, so that's why I did not optimize here. Okay, so basically what we will be doing here, we will be comparing all the rows, right? All the transactions. So we will be starting one loop from I equals to 0 to I is less than n. Second loop we will be starting from j, which will be starting from I plus 1. That means from next transaction we will be starting. Okay, j is less than n and j plus plus. What we will be comparing? T of I dot sender is equals to T of j dot sender, and then T of I receiver is equals to T of j of receiver, and then T of I of amount is equals to T of j of amount, and absolute difference between T of I time minus T of j dot time is less than or equals to 60. Okay, so if the amount is same, okay, the difference will be 0. Sorry, if the time is same, the difference will be 0. Okay, and also if the time stamp is less than or equals to 60, so this kind of absolute difference will work. Also we need to compare if everything is same, like the sender name. So T of I equals to sender is equals to T of j dot sender is not. So we are comparing two transaction, right? One transaction is on ith place, second transaction is on jth place, right? We are comparing two transactions here, like we do in SQL, right? I hope you guys have written these kind of codes in SQL also. So we are comparing if everything is same, if the sender name is same, if the receiver name is same, if the amount is same, and if the absolute difference between the time is less than or equals to 60, then in the ith index of fraud vector, we will be storing true, and the jth index also we will be storing true, that the both transactions are fraud. Okay, then simply we got the fraud transactions. Okay, after that in the cout we will be printing the fraud transactions, so we will be putting a loop like this. Okay, then we will be checking if the fraud I, that means if it is true. Okay, we will be printing the transaction like this, that T I dot sender, T I dot receiver, T I dot amount, and T I dot time. So this way we can print our fraud transaction. Now I don't know what was the exact output that got asked in TCS, but this is the main code, okay, which they asked today. I hope the question is clear. How we are comparing each record, how we are seeing the time difference, how we are storing the data. Okay, so this code is in C++ for right now. Okay, you can take the screenshot or you can write the code and you can ask the chat GPT to convert it into Java, Python if you want. Okay, so this was the logic. Okay, I hope the logic is clear, how we are storing the things, how we are doing the things. Okay, everything is clear. And if you have done this question, how many test cases you have passed, you can tell me in the comment section. Thank you so much for watching. Hi everyone. So in this video, we will be solving the both coding question from TCS NQT which got asked in the first shift today morning in TCS NQT exam. Okay. Why we are solving the both question? One question I already solved before, but we are solving both question because in the last video, some candidates told me that they asked we need to solve it using hash map, but that is not the case. Okay. You just need to pass the test cases. They mentioned that it is recommended to use hash map. It is not like you only need to use hash map. Why they have mentioned that? Because the input was complicated, so they just
mentioned the notes so that you can think about how we can store the input, right? So it is not like that it is mandatory that you should use hashmap, but in this video we will be using the hashmap solution also. That was a little complicated. The first question is very very easy. Before going with it, I just wanted to talk about the mock test series. So as you guys already know, the both questions of today were very easy. Aptitude questions were very similar to the live test which we have provided in our course. So there are a lot of live mock tests which you can see in our course. Okay, if you are purchasing the series, the discount code also you will be getting in the description. The main thing is the aptitude question which got asked today was very very similar. So if you want, you can purchase the TCS NQT mock test series. The link will be in the description, and through that you can basically practice, okay, that what kind of paper you can expect in your actual exam. Let us start with the first question. So the first question says a gym offers membership for 3 months. It's the 5,000 cost, for 6 months is 7,000 cost, for 9 months is 12,000 cost, for 12 months is 15,000 cost. Okay, given an input number of months, return the total cost. If the input cannot be formed using this plan, print error. Okay, so basically what we need to do in this question, basically see, they are saying the costs are respective to the months which they have mentioned. The basic thing is if we can make the plan or not. Okay, so suppose if someone asks if I can a 15 months plan, yes, I can make a 15 month plan. Okay, I can use the 3 month plan 5 times. Okay, 3 month plan 5 times I can use, right? If someone will ask me, can I make a 18 months plan? Yes, I have multiple ways. I can use 3 months plan 6 times, 6 months plan 3 times, 9 months plan 2 times, right? So what we need to check is basically if the number which they are providing in the input is the multiple of it or not. Okay, if it is a multiple of this, then definitely we can form a plan. If it is not a multiple of it, definitely we cannot form the plan. Okay, so very simple if else based question. Okay, so suppose if someone says I don't know what they wanted to print, but if someone says we need basically a 24 months plan. Okay, if we need a 24 months plan, what will be the output? Okay, so for a 24 months plan, simply it was if you can see here, it's 15,000. Okay, it's 15,000 multiplied by 2, okay, which is 30,000 rupees. Okay, so that thing we can print. I don't know what they wanted to print, but this kind of output we can give. Okay, so basically we can directly use the if else condition to solve this question. Let's solve this question. Very very easy question. Okay, so again we will take the input of n, which is the total number of months. If the n is divisible by 12, which is modulus by 12 is equals to 0, we will print n divided by 12 multiply by 15. This will be the plan cost. Else if we will be using, if it is divisible by 9, we will be multiplying by 12,000. Otherwise we will be multiplying it with 7,000 or 5,000. Okay, depending upon what is the plan. Okay, else we will be printing the error if the plan cannot be formed. Okay, and I think this solution passed 7 by 7 test cases, or maybe 6 by 7 test cases. Okay, this solution passed these many tests. Even if the solution if the candidates are printing direct, like C out 6,000, C out 7,000 according to the plan. Okay, because I think out of 7 test cases, 6 test cases were like this only, in which you can directly print the amount also. There was no multiple. Okay, so it will just pass 6 out of 7 test cases. Okay, very simple, easy, if else based question. Next question which I wanted to discuss. Okay, so I hope question you guys already know. If you don't know, I will just explain you. There are multiple transitions given. Okay, we will be solving using map approach in this video. Suppose our transaction says Anu, Ram, 200 and 1000. Okay, so there will be some transaction given in this format, in which the sender name is given here. So this is sender, this is receiver, this is the receiver name, this is the amount, and this is the time. Okay, we need to find out the fraud transaction. The fraud transactions are, if the transaction is same, so suppose again it is Anu, Ram, 2000, sorry, 200 and 1000. Both transactions are same, so this is a fraud transaction. Or the difference between the time stamp is less than 60 seconds. So suppose it is Anu, Ram, 200 and 1050.
So difference between 1000 and 1050 is 50 seconds, right? So again, this is the fraud transaction. So we need to print out the fraud transactions. Okay. If the transaction is genuine, suppose what will be the genuine transaction? That will be, suppose Anu Ram, suppose it is 200, but suppose it is 2000. So timestamp difference you can see here. Okay, so timestamp difference is a lot. It is not within 60. Okay, we need to only give the front transaction if the values of the transaction is same or the stamp is less than 60. Okay, so basically this is the question. Now see, for solving this question, our approach will be very simple. The output of the transactions are given like this. So suppose n transactions are given like this. Okay, or we need to print the fraud transactions. Suppose five transactions are given, okay, and suppose the transaction is like, suppose the sender is A, the receiver is B, the amount is 200, and first timestamp is 1000. Second one is A, B, 200 and 1050. Third one is B, C, 100 and 2000. Okay, so these kind of transactions will be given here. Okay, first of all these transactions are given in string. So we need to take the input first. Okay, take the input first, and we need to store it in a proper data structure, right? So that we can store it in a map properly. Then we will solve this question. So let's start. First of all, we will be creating one structure. Okay, in that structure, we will be storing the sender receiver. See, if you want, you can eliminate the structure as well. You can directly store that in variables, and that variables you can use. But here I am using structure just for a better code quality. Okay, so two strings we are taking, sender and receiver, in which we will be storing the names, then amount and the time. Okay, then we are storing the total number of transaction here. We are taking the input of the total number of transactions. Then we are creating one vector which will be storing the transactions. Okay, now the vector type is transaction. The vector type is transaction. Okay, and this transaction type will hold two strings. One is sender, one is receiver, two one double which is amount, and one long which is time. Okay, that we will be storing here. So now we will be running one loop. Okay, after running the loop, we will be reading the line. So string line we have created, get line we will be use. Okay, because it is in strings. Then we will be using the string stream. Okay, then after using the string stream, we will be splitting it. Okay, then we will be storing basically t of I, sender, receiver, amount and time. Okay, all the four things, okay, we are storing in transactions of ith index. So suppose in the 0th index, what will store here? A as a sender, B as receiver, 200 is amount, and 1000. Okay, that is stored like this. So in T of 0, this will be stored. In T of 1, the another transaction like A, B, 200 and 1050 will be stored. Okay, so this is our teeth basically. This is our t vector, which is individually storing all the structure. So you can say this is all the structure. So I can say these all are in the middle bracket, and there's a comma between these structures. Okay, so this kind of format is there. Okay, so we are storing this. Okay, so we are storing like this. Say this is our full array. The first structure is here, then comma, then second structure is here. So this is t of 0, then this is t of 1. Okay, this kind of structure we are storing in our complete array. Okay, then we are creating one map for basically storing it and optimizing the code. Okay, how will we using that map for storing this? So first of all, I am creating one map. The string will store the whole key. Okay, and the value will be storing the timestamp. How? See, suppose this is the transaction which is A, B, and 200 is amount, and 1000 is timestamp. Okay, first we need to check if the transaction is same. So suppose if the transaction is same, that is completely fine. But the transaction, if the suppose a transaction is different, then we need to check the difference between the timestamps, right? We need to check the difference between the timestamps. So only the difference between the timestamps we will be needing, right? So we can store the timestamp as value, and we can store
all these three parts, which is A, B, and 200, because we will be not needing this as key. So we will be storing in our map like this. So suppose the first record will be stored like this is the key, which is A pipe B pipe 200. This is the key, and the value which it will store is the timestamp, which is 1000. Second key will be suppose A pipe B pipe 200, and the timestamp is 1050. So in this structure, we will be storing our map. So the key will be sender pipe receiver pipe amount. Okay. So we will be running one loop. Okay. Here we are extracting. So we are forming the key. How we are forming the key? T of I dot sender plus pipe T of I dot receiver pipe plus two string whatever the amount is that, and in that key we are pushing. Okay, so in the map we are pushing what thing we are pushing the timestamp and the index, because index also we will be needing. Okay, if we want to print the transaction, that then we will be needing the index also. So we are pushing the transaction time and the index. For that we are creating the map like this. So the structure is string. This string will be holding the key, okay, the whole key, and we want to store the timestamp plus the index. So timestamp is in long, so we will be creating one vector which will be storing the pair of long comma int. This int will be storing the index. Okay, so this will be our code. Then this vector we will be creating which will be storing the fraud transactions, which transactions are fraud. Okay, then we will be running one loop on our map. Okay, one loop we will be running on our map, and we will be storing the timestamp and the index, whatever the index is. So suppose this is the first index, this is the second index, this is a vector, right? This is a vector. So basically the key is vector, right? So we are running the loop on the map and we are storing the vector here, okay, of the loop. So it dot second, we are storing the loop here. Okay, don't worry about the syntax. If you know about the maps, definitely I think you guys know about the syntax. Okay, then we will be sorting our vector. Okay, so suppose, see how our map will be looking like. I'll just explain you. Suppose there are four transactions. Okay, A comma B comma 200 and 1000. Okay, A comma B comma 200 comma 1050, A comma B comma 200 comma 2000. Okay, then B comma C comma 200 comma 2500. How our map will be looking like? Okay, these are the transaction. First key will be, see, this is the key A pipe B pipe 200. Okay, and this key will be storing what? 1000 and the index like 1. Second, it will be storing, because key will be unique, right? So it will be storing 1050 comma 2. Third, it will be storing 2000 comma 3. Okay, with index it is storing the timestamp. Another key which is B comma C 200, it will be storing 2500. Okay, that's how our map will be looking like. Okay, so now we are sorting the timestamps, right? We are sorting the timestamps. Why we are sorting this vector? Because see, we want the difference should be between 60 seconds, right? The difference, if the difference is between 60 seconds, then definitely that is a fraud transaction. So we are sorting that. We are sorting the timestamps, right? Then we are running, we are initializing the value of j as 0. We are starting our loop. Okay, from index 0. We are running a loop on our timestamps. Okay, and we are checking if the value, okay, in the vector we are storing the timestamp, right? So we are checking if please listen carefully, if the timestamp is greater than 60. Okay, if the timestamp is greater than 60, then we are doing j plus plus. Why we are doing that? Okay, see, after sorting, suppose my j is pointing out here. Okay, I am on this index, right? If all the transactions who are coming into the next 60 seconds, I can ignore them, right? Because all those transactions will be fraud transactions, right? So suppose I am on 1000 timestamp, I can say any transaction that is genuine. Okay, that transaction will be after 1060, right? Because 60 seconds gap should be there. Okay, that's why what we are doing, if
the vec of I dot first minus vec of j dot first matlab we are subtracting the difference and we are checking if it is greater than 60. Okay, then we are increasing our index, otherwise we will store all other transaction which is coming in between. Okay, all the in between transactions we will be storing that in as a fraud transaction. So in our fraud vector we will be storing those transactions as fraud. Okay, and we will be making the boolean index as true. Okay, so this is the basic code which we are doing, and at last we will be printing all our fraud transactions. Now see, I will be giving you one summary like what we have done. Okay, what we have done, please listen the summary because it might get confusing because my previous solution was very easy. That's why I uploaded the previous solution, but some candidates are asking we want the map solution was little bit complicated. Okay, because here we are using one additional data structure for optimizing the code. Okay, so now listen carefully what we are doing. Basically, suppose in our map this is the key which is a b 200. Okay, then it is storing suppose 1000, 1000, 40, 1050 and 2000. Okay, suppose I am starting from here, so my j index will point out here which is 0th index. Okay, so what I will be doing here is I will be looping out from the next index, and what I will be seeing if the difference is greater than 60. Okay, so if I will check if the difference is greater than 60, so is the difference greater than 60? No, it is 40. Okay, so I will go on the another index though, so my I will increase, right? My I will increase to this index, then this index. Now I will again check if the difference is greater than 60. No, it is not greater than 60. Again my I will increase to this point. Okay, now when I will reach to this point, I will see the difference is 1000, that is greater than 60. Okay, now what I will do is I will do j plus plus. Okay, so my transaction from here it will move out to here. Okay, from my transaction here I will move out here. Okay, so I will move out to next index. Okay, so this is the basic thing which we are doing. Okay, we are ignoring all the transaction which are coming in between. Okay, which are coming in between, we are ignoring all the transactions. Okay, and that's how all our fraud transaction we are storing. If any transaction is fraud, that we will be storing. Okay, even if the transaction is same, it will be storing after that. Okay, so all the transaction which is coming in the range of 60, we are ignoring that. Okay, and we are storing that in our fraud array. Okay, fraud boolean array. I hope this is clear. If it is not clear, you can rewatch the video or you can check my previous solution. Okay, so then it will clear. It will make more sense. Okay, or you can rewatch the video because it was little complicated to explain this. Okay, if I will write down the code, it was easy, but to explaining it was little complicated. I tried my best. I hope you guys got it. Thank you so much for watching. Hi everyone. So in this video, we will be solving 21st March. Second question, because most of the students did not solve this question today. Okay, because they did not pass the test cases in this question. It was the tough question, you can say. Students find difficulties in solving this question, so I am solving this question. Okay. Also, I am solving this question with the guidance of the student who solved the 7 by 7 test cases in this question. Okay, so only one student I found who passed 7 by 7 test cases in this question. Okay, so what is the approach he told me? Based on his approach, I am solving this question. Okay, so why I am telling you guys this? Because see, I have not seen the question from my eyes. So I will ask the question. I will ask this to the student like how you have solved this, because today actually I asked to the many candidates like how you solved this question, but they actually did not pass the test cases. Only one student I got who passed all the test cases in this question. That's why I am using his approach to solving this question. Okay, so first of all, make sure to like this video, and second thing, before starting the question, today this kind of response I got from the students. Okay, so thank you so much, sir, all because of your course TCS NQT prep. Thank you so much for providing such content. The level of numeric question was same. Okay, again the next response, yes sir, thanks for your help and structure guidelines throughout the preparation. Again, he did very great in the exam. Okay, and his approach only I will be using in this question. Again,
Numeric I will get 12 plus, verbal 15 plus, reasoning 13 to 14, advanced coding one question class. Thanks for your effort, sir. Okay, everyone today appreciated me. I am in sky today because students are appreciating me a lot today. So thank you so much. Okay, आप देख सकते हो कोडिंग बहुत ज्यादा आसान था. Thank you. रीजनिंग इंग्लिश सेम मॉक टेस्ट जैसा था. मतलब everyone is appreciating. Thank you, sir. It's all because of your course. Okay, so today actually I am glad that students are appreciating so much our effort, because on the result day only. Okay, मैं पहले से कितना भी बोलता रहूं कि मेरा कोर्स बहुत अच्छा है, आप खरीद लो, आप निकाल पाओगे, टीसीएस क्रैक कर लोगे, बट जब बच्चे देके आते हैं एग्जाम तभी पता पड़ता है कि उसने कितना इम्पैक्ट छोड़ा, right? And still, if you have your TCS exam, if you, I know you have very less time to prepare, I would suggest to focus on these live tests. They are helping a lot of students. Okay, so you can just go in this section, which is TCS NQT actual exam live test. Okay, in this, if you can see here, there are a lot of live tests provided, so you can use them for your practice, and definitely they will helping you out for clearing your foundation section. Okay, the link of the mock test series will be in the description. Let's start with this question. So the question says, okay, there will be total n number of soldier. We need to place the soldier. There are the values array given. There's a end number given. Each soldier number is chosen from the value array. No two adjacent soldier have the same number. The first soldier must be having the number 1. The last soldier must be having the number end. Find the total number of valid arrangements. Okay, so you will not understand the question like this. I will be explaining you. So basically they are saying there is a number given which is n equals to 4. Okay, n equals to 4. That means total 4 values will be given to you, like 1 2 3 4. Okay, so n is telling us the size of values array. Okay, now one n number will be given to us. Now they are saying the first soldier will be always 1. Okay, the last soldier will be the element which they have provided here in the end. So suppose 1 is here and 3 is here. Okay, because 3 will be the last soldier. Now we need to find all the valid arrangements, right? And the final output is 7. The condition is there can be no two soldiers who are adjacent and the number is same. For an example, 1 2 4 3, this arrangement is valid. But if I will say 1 1 4 3, then this arrangement is not valid because two soldiers are adjacent, right? That's why. So 7 valid arrangements will be, suppose 1 is here, 3 is here. Okay, so let's use 1. Can we use 1 here? No. So we can use another number. Can we use 1 here? Yes, we can use 1 here. Okay, in between we can use 2, in between we can use 4, right? So 1 4 1 3, these are the two valid arrangements. Now again, starting from 1 ending from last, these are the fixed two positions. Okay, now 2 I can choose here and I can choose here, right? So if I will choose here 2, I can choose 4 here, then again I can choose this arrangement. There will be 1 4 2 3. These are the two arrangements. Okay, so this way we can find 7 arrangements like this: 1 2 1 3 1 2 4 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 and 1 4 2 3. Okay, these will be our 7 valid arrangements. Okay, in which no two soldiers are adjacent. Okay, and these are the valid arrangements, so output is 7. Okay, so this was the question. Okay, now most of the question, most of the students today did not pass the test cases in this. Okay, I will be telling you the reason also. That student told me that why most of the students failed to pass the test cases. Okay, so see, let's start with the approach. How we will be solving this question? Approach is pretty easy. We will be directly using recursion. There is no need to use DP here because the recursion solution passed all the test cases. So we need to find the valid sequence, right? At the starting position, we will fix 1. At the ending position, we will be fixing 3. Okay. And now we will run our recursion solution. How we will run our recursion solution? We will be running a loop. We will be running a loop for all numbers, from the value as array. Okay. We will be fixing our index
and we will be trying all the numbers there if the number can be fit there or not. For an example, we are running a loop on this array, and suppose our index is this one. Okay, we will try with 1 here. So suppose 1 is here. Okay, so can we try 1 here? No, because the last number is same, right? So current index number should be not same as index minus 1, right? So 1 cannot be here. Okay, so we will not place 1 here. Then 2, can we place 2 here? Yes, so 2 we can place here, and then we will pass this arrangement, okay, to the next recursion, and we will do this index is fixed, right? So we will do index plus 1. So because for next index we need to find the another solution. Okay, now we will be having two choices. Either we can use this, okay, suppose at this index we are using 2, okay, or we can use another number, suppose 3, we can use here 3 also. Okay, so that way our recursion will work, and however recursion tree will look like, I will make a recursion tree so it will be easy to you to find out how our recursion is working. Okay, so this is our recursion tree. 1 is fixed, okay, 1 is fixed, 3 is fixed. Okay, 1 is the starting number, 3 is the last number. So our recursion tree is working like this. So first सबसे पहले for first index, okay, we will be using numbers from the values array 1 2 3 and 4. Okay, there we will be using all the values, and we will be checking if we can proceed with it or not. So at the first index we will be trying 1. This is the first solution. We will be trying 2. This is the another solution. We will be trying 3. This will be the another solution, and we will be trying 4. So 1 4 3, and these are the blank spaces. Now these are the all possible 4 values which we can place, right? Then we will expand the tree. So if you will see here, the index is not matching. Like, if you can see here, the index is not matching. Index and index minus 1 is same, so this solution is not valid. We will drop it. Suppose this is a valid solution, then again we will expand the 4 solution here, okay, for the next place. That means for index plus 1. So currently it was for first index, then it will be for second index. There will be 4 solution: 1 2 1 3, 1 2 2 3, 1 2 3 3, 1 2 4 3. These will be the 4 possible solution. This can be a valid arrangement. Okay, this is fine. And now we don't have any index, so count plus plus. Okay, then like this is the one valid arrangement. Then 1 2 2 3, again both index are same, drop this solution. 3 3, both are same, again drop this solution. 1 2 4 3, this is the valid arrangement, so count plus plus, again this is the valid arrangement. So this kind of recursion tree we will be using for each and every number. We will be expanding our tree, and we will be counting the arrangements. This will be our solution approach. I hope you guys got it. Okay, so for that, okay, how we are writing the code? See, first we are taking the input of n. You can use c in n, and then you can run a for loop, and you can take the values array in the input. Then at the end you can use c in end, right? These are the 3 values which we need to take as input. Then we will be passing that in our count arrangements function, n values and end. Okay, so all these 3 values we are passing here. Okay, now this is the basic thing which I wanted to discuss. Okay, so now at the first index we are assigning 1. At the last index we are assigning our ending number, which is 3, as given in the input. Our starting count is 0, number of possible arrangements. Then in the solve function we are passing 1, because from 1 index we need to start the filling of the arrangements. We are passing our array, we are passing values, count and n. Okay, everything we are passing. This is our arrangement array. Okay, this is our arrangement array. This is our values array. This is our count of the total number of arrangements, and this is the size. Okay, then this is the function, right? So first we are checking our test cases. Okay, the first base case, the base case is, okay, if the index is equals to n minus 1, that means we reached to the n minus 1 position. Okay, if we reach to the n minus 1 position, what we will be checking? If index is not equals to index minus 1. Okay, if the index is not equals to n index minus 1, that means both numbers are not same, then we will be doing
count plus plus, right? This is the thing which we need to do because the no adjacency two numbers can be same. So we will be doing count plus plus. This is our base case, right? And we will be returning. Okay, next we will try all our values for filling the arrangement which we discussed in the approach. So we will be starting our loop from 0 to the values dot size, right? So this loop we will be continuing. We will be assigning the one by one all the values in the val variable. Then we will be checking if val is not equals to ARR arrangement of index minus 1. Okay, so if both are same or not, if both are same, then we will be dropping. So then we will be not using the recursion logic and we will be dropping that value, right? Both should be not same, the current value and the index minus 1, right? So we are checking this condition. Then at the current index we will be assigning that value which we have discussed. So suppose this is our arrangement 1 and 3. Okay, so in the loop, suppose first we have 1. So now these are our value, right? 1 2 3 4. So for this place 1 came, so this condition will fail because 1 and 1, these both are same, index minus 1, right? So this will drop. Now there is 2, right? So we will place 2 here. So ARR of index will become 2. So this will become 2, and then we will pass this arrangement for the next index. So this index we will be filling, right? So we will be passing index plus 1, ARR, values, count, and n. So this way we will be getting all our solution through recursion. The main thing why the test cases were failing, the student told me everywhere we need to use the pass by reference. Okay, pass by reference we need to use everywhere. If we are not using the pass by reference everywhere, then the test cases were failing in the actual exam, and this was the actual solution which the student did, and he passed all the test cases. Okay, I hope the solution is clear. I hope the question is clear. Thank you so much for watching this video. If you want to prepare, you can purchase the TCS NQT mock test series. The link will be in the description. हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन जो कि यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में आया था कल के एग्जाम में, मतलब 21st के एग्जाम में जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया था इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं एंड सेकंड वाले को बाद में सॉल्व करेंगे. दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है. एंड बाकी एक चीज मैं बता देता हूँ कि पिछले 2 दिनों से आई वाज वर्किंग सो हार्ड फॉर टीसीएस. आप देख सकते हो कि बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करी है एंड लिटरली आज ऐसी स्थिति हो गई थी, आज मुझ पर मतलब बिल्कुल उठा नहीं गया. आज मैं सोता ही रहा पूरे दिन भर. बिकॉज देखो आप लोगों ने क्या किया कि एक शिफ्ट का एग्जाम दिया. आप ये मान लो कि मैं तो हर दिन 2 शिफ्ट का एग्जाम दे रहा था. हर शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसके बाद बच्चों से बात करी, फिर वीडियोस बनाई, फिर और बच्चों से बात करी, फिर तब तक सेकंड शिफ्ट आ गई, उसके बच्चों से बात करी, फिर वीडियो बनाई, फिर उसके अगले दिन फिर से बच्चों से बात करी, फिर वीडियोस बनाई. तो इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था कि पिछले 2 दिनों से मतलब नींद भी नहीं आ रही थी मुझे, इतना ज्यादा हेक्टिक टेंशन सब हो गया. सो इट वाज सो हार्ड, बट टुडे आई एम रिलैक्स. सो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. एंड ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट केसेस वगैरह पास किए. जितना मुझे बताया क्वेश्चन जो आया था उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है. बाकी इफ यू हैव योर एग्जाम ऑन 26 या फिर अप्रैल में, सो यू कैन परचेज अवर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज. काफी बच्चों ने काफी अप्रिशिएट किया है फॉर दिस मॉक टेस्ट सीरीज. इसमें आपको बहुत सारे लाइव टेस्ट मिल जाएंगे. अभी अभी आपको भी पता है कि आपके पास कम टाइम है प्रिपरेशन का, राइट? तो आपका जो मेन फोकस है वो क्या होना चाहिए, ये जो आपकी लाइव टेस्ट है ना, इन पे फोकस होना चाहिए. कोडिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, कभी एकदम से हार्ड आ जा रहे हैं, कभी सिंपल आ रहे हैं. तो कोडिंग क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको इतना ज्यादा रिकमेंड कुछ नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर कुछ अल्ट्रा ही कर लो. अगर आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, कोडिंग क्वेश्चन थोड़े से अनएक्सपेक्टेड टाइप के हैं. तब भी हमने प्रैक्टिस कोडिंग के लिए शीट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है. वरना मतलब वैसे मैं सही बता दूं, कोडिंग क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही. जो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन है ना, उसी से आपका काम बनेगा. बाकी जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो सॉल्यूशन में. ज्यादातर एक इफ एल्स वाला क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करने के लिए, जो कि सिंपल ही है, तो वो आप डेफिनेटली गो थ्रू कर पाओगे. बाकी एप्टीट्यूड क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप ये लोग लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. अभी सारे टेस्ट लाइव है, ठीक है. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया, उनको पसंद भी आया है. सो यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज एंड एटलीस्ट आप लाइव टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड अगर लाइव टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर जो डेली टेस्ट दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखे हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, अलग से सारा मिक्स करके, जिससे आप तुरंत 300 क्वेश्चंस को खत्म कर पाओ. इसके अलावा क्वांट सेक्शन में आपको डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे. प्रैक्टिस सेट्स नीचे काफी सारे मिल जाएंगे विच यू कैन यूज फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, सो लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. स्टार्ट कर लेते हैं जरा सबसे पहले वन बाय वन. सो सबसे पहला ये क्वेश्चन था जिसमें लिखा है यू आर गिवन एन नंबर्स ऑफ पर्सन, डब्ल्यू ये द वेट ऑफ पर्सन है, एंड वाई इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैलून, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन फ्लाई इन द बैलून सच दैट द टोटल वेट डज नॉट एक्सीड वाई. अब आई डोंट नो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है या नहीं है, बिकॉज जो मुझे बताया बच्चों ने उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है. बिकॉज ये बोल रहे हैं कि एन नंबर ऑफ पर्सन है, तो सपोज यहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इनपुट पे जाऊं, तो सपोज ये यहाँ पर इनपुट दिया गया कि भाई 5 लोग हैं, ठीक है, उनका वेट यहाँ पर दिया है लाइक 40 50 60 30 एंड 20, एंड कैपेसिटी दी है 100 बैलून की, ठीक है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने बच्चे कितने लोग फ्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, हम इसको डायरेक्टली सॉर्ट कर लेंगे। एक बार हमने सॉर्ट कर लिया तो जो सबसे लाइटेस्ट वेट वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, तो 20 30 40 50 60 ही हो जाएगा, ठीक है। हम स्टार्टिंग से चेक करना चालू कर देंगे, इसमें से माइनस करके चेक करते चले जाएंगे कि वेट जीरो तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले पहला व्यक्ति जाएगा तो कितना वेट हम और कर सकते हैं, 80 इसमें ले सकते हैं, राइट। फिर अगला व्यक्ति गया, भैया 30 और माइनस कर दो तो 50, और काउंट कितना हो गया, 2। फिर एक और व्यक्ति चला गया भैया 40, तो टोटल कितने हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति होंगे मैक्सिमम जो जा सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आउटपुट 3 आ जाएगा। सो आई थिंक ये तो काफी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। इनपुट लेना, इनपुट आई होप आपको पता ही होगा, सबसे पहले सी इन एन कर लेना, या जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो उस हिसाब से इनपुट लेना डायरेक्टली इंटीजर का। उसके बाद एक एरे में ले लेना इनपुट, राइट। तो फॉर लूप चल जाएगा आपका आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक, राइट। उसमें आप इनपुट ले लोगे, फिर आप वाई का इनपुट ले लोगे, सी इन वाई करा लेना, या जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसमें सबसे पहले एन कर लेना, जो भी आपका एरे है उसको कर लेना, और आपका वाई कर लेना, उसके बाद आप एक फंक्शन में पास कर देना, ठीक है। फंक्शन कैसे होगा, देखो सबसे पहले आप सॉर्ट कर लेना, ठीक है, सॉर्ट कर लोगे आप पूरे का पूरा, जो भी आपका वेट वाला एरे है जो अभी हमने देखा था, राइट। तो वेट वाला एरे हम पूरा सॉर्ट कर लेंगे तो वही हो जाएगा, वो 20 30 40 50 और 60, राइट। ऐसे सॉर्ट हो जाएगा पूरा एरे, सॉर्ट फंक्शन का यूज कर लेंगे, ये स्टेप 1 हो गया। अभी हम जो पर्सन है उनका काउंट इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और सम भी इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो या तो आप वहां से 0 चेक करते चले जाओ माइनस करते करते, या सम आप चेक करते चले जाओ कि 100 से एक्सीड तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आई का लूप चला देंगे 0 से लेके एन तक, सम में ऐड करते जाएंगे वेट। तो सबसे पहले आप देखोगे सबसे पहले 20 ऐड हो जाएगा सब में, राइट। और अभी ये 100 या 100 से कम है, तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। फिर दोबारा से इसको इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगला पर्सन इंक्लूड हो जाएगा 50। अभी भी 100 या 100 से कम है तो हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 2। फिर अगला इंक्लूड होगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 90। ये भी 100 या 100 से कम है तो हमारा काउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। अब अगला आ गया 50, तो 50 इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 140। ये 100 या 100 से कम है, नहीं है, तो इसको ब्रेक कर देंगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Hi everyone. So in this video we will be discussing about the coding question that got asked in today's shift 26th March. So we will be discussing about the coding question in this video, okay? Also make sure to like this video. Also one thing, that you will be getting the link of the mock test series in the description, so you can purchase the mock test series. The major thing is all the test which you will be getting the mock test, okay? The level will be very similar to TCS NQT. So you can attempt the live test. After attempting the live test, you will be seeing your rankings. Based on your rankings, you can judge yourself that what ranking you are getting, what ranking other students are getting. Based on that, you can judge your performance. Okay, so these live tests will be helping you out. So you can purchase the TCS NQT mock test series if you have your exam on 1st or 3rd April, and there are a lot of mock test and live tests are available for practice. Let's solve this question which got asked in today's shift. This question is not difficult, okay? Let's talk about this. First of all, the question is saying maximum product subset, which is saying you are given an array of integers can include a negative, 0 and positive. We need to find the maximum product possible by multiplying any subset of elements. So suppose this is the array given, so here we can choose any elements. We need to find out the maximum product from this array, okay? So if you will see these elements, the maximum product will be 4 multiplied by 3 multiplied by 2. Okay, so that will be 24. Okay, now let's discuss about this. Okay, we can do this, but how we are doing this? If we can do this in maths, then definitely we can do this in coding as well. Okay, so first of all, we will try to understand that with the mathematics how we will be doing this. Okay, suppose this is the array 1 2 3 4. Okay, what we can do here is all the elements are positive. So if all elements are positive, what we need to do is we will multiply all the elements, and that will give us our answer. Like if you will calculate this is 24. That's what we can get as maximum. Okay, suppose there is 0 here, 0 2 3 4. So we can, if there is any zeros, we can ignore the zeros and we can multiply all positive elements. Okay, that will give us our answer. Okay, now these two conditions are sorted and solved. Okay,
Now coming to the next condition, suppose there is odd number of odd number of negative elements. For an example, there is -1, -2, -3, 1, 2, and 3. Okay. Suppose here we need to find out the maximum product from this array. Okay. What will be the maximum product? Let's solve this with maths. If we can solve this with maths, definitely we can solve this with coding. Okay, so that's how you actually need to think in your exam. Don't write the logic first, please think in your mind first via maths. After solving this question using maths, you can solve in coding. Okay, so if we want to get the maximum product from here, we will multiply all the elements from positive elements, right? So that's 3 multiplied by 2 multiplied by 1. Okay, now from negative elements, first of all, if there are total odd number of elements, we will be ignoring one element, so it will make it even. And which element we will be ignoring? We will be ignoring the maximum value from negative, right? So the maximum value from the negative element is -1. Okay, if we will include this, it will not give us maximum product, because if we want to get the maximum product, we will be multiplying with the smallest elements of negative, right? So that will be -3 and -2. Okay, so multiply by -3 and -2. This will give us the maximum product from this array, right? So it's 6 multiplied by 6, that is 36. So 36 will be the answer. So see, now it comes a very important point, a very important point. Okay, if we have total even number of negative numbers, then the minus minus will get cancelled. Okay, so what we can do is, if we have even number of negative numbers, we will be multiplying all the elements and we will be ignoring the zero. Okay, we will be multiplying all the positive elements, we will be multiplying all the negative elements, and we will be ignoring the zero. That way we can get the maximum product. Only condition which we need to use is, okay, which will be different. Okay, because we will be doing all multiplication after ignoring the zero, for either if the all elements are positive, all elements are positive, and the element count of the negative elements are even. Okay, but only one condition which we need to use is, if the negative elements are odd, then what we need to do is, we need to remove the maximum element from negative. Okay, and then we will be multiplying all the elements. Okay, that's what we did in the example, right? So that will be our logic. I think the logic is clear. Okay, so it's simple. First of all, we will be storing the array size in n. Okay, if n is equals to 1, return arr of only one element is there, we will be returning the first element itself. Okay, now for storing the maximum negative element, if you remember, in our code what we have stored, we have removed the negative element, the maximum element from negative, right? That we will be storing in this max negative. Okay, in max negative we will be storing that element. Okay, so the also we will be storing the count of the negative elements. Okay, because just we have discussed, we will be needing two things: the count of the negative elements if it is even or odd. Okay, and we will be also storing the maximum negative element, so if the count is odd, so we can remove that element. Okay, and the counts of zero as well we will be storing. Okay, and the product, the final product value, we will be storing here in the product. Okay, now we will be looping our array. Okay, if the current element is 0, we will be increasing the count of 0 and we will continue our loop. Okay, if the element is less than 0, okay, if the element is less than 0, then we will be increasing the count of the negative element. Okay, because we need to count how many negative elements are there, if they are odd or even. Okay, also we will be checking if this element is the max negative element, so we will be storing the value of max negative element by doing max of max negative comma x. Okay, so that way we can check all the elements and we can store the value of the maximum negative element. Okay, then after this condition we can multiply the value of all elements, right? So product multiply by x.
Okay, it doesn't matter if it is a positive element, if it is a negative element. Okay, we are multiplying each and every element, right? We are multiplying each and every element. It doesn't matter if it is negative or positive. Okay, at last we will be checking the count. Based on that we will be doing that. Okay, so that way we will be getting the whole product. Okay, after getting the whole product, we will be checking if the count of 0 is equals to n. That means if all elements are 0. Okay, if all elements are 0, we will be returning 0. Okay, we will be returning 0 if the count of 0 is equals to n. If the all elements are 0, we will be returning 0, right, as an answer. Then we will be checking if the count of negative element. Okay, if the count of negative element is odd. Okay, if the count of negative element is odd. Okay, then we will be checking if, then we are checking one more special case. Okay, if the count of negative element is 1, that means only one negative element is there. Okay, and count of 0 plus count of negative is equals to n. Okay, count of 0 plus count of negative element is equals to n. Then also we will be returning that the value as 0. Okay, then also we will be returning the value of as 0. Okay, because if there is only one negative element. Okay, if there is only one negative element and all the other elements are 0, so the maximum value which we get from the array, that will be 0 only. Okay, so that's why we will be directly returning 0. Okay, after that, okay, if the negative element count is odd. Okay, what we need to do is, whatever the maximum element is, we multiplied all the elements here, right? So product multiply by x we did, right? So we will divide our product by the max negative, because we need to remove that element, right? So we will be dividing that by max negative. Okay, then at final we will be returning our product. Okay, so by this logic, what we are doing here, I will just explain you in summary. Suppose this is our array: -2, -3, -4, 2, 3, 4. Okay, so we are multiplying all the elements. Okay, so we are doing -2 multiply by -3 multiply by -4. Okay, multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4. We did this. Okay, so after that we will be actually calculating the product. Okay, so it will be 24 multiplied by 24. Okay, so it will be -24 multiplied by 24. Okay, this will be our product value. Okay, now after computing this, we will be checking the count of negative element. So count of negative element here is 3, right? If the count of negative element is 3, we will be storing the maximum negative element also. So the maximum negative element is -2 here, right? -2 here. So we will be doing divided by -2, so it will be 12. So 12 multiplied by 24. Okay, this will be our final answer. Okay, this will be our final answer. And even if you will look here, if you want to find out the maximum answer from this, okay, definitely we will be ignoring the smallest negative element or the maximum element. Okay, from here, and whatever the count is, we will be getting, that will be our final answer. Okay, so that's what we are doing. Also we are tackling some special cases so that all test cases should pass. Okay, so the question is simple: if you can solve this question using maths, which we have discussed, right? Like multiplying all the positive element and multiplying all the negative element as well, and if the count is even, no problem at all, because even count will cancel out the negative sign. But if the count is odd, we will be ignoring the maximum element, okay, from negative. So that's what we will be doing in this question. So I hope this question is clear. And see, I will be just showing you the Java solution as well. See the this is the Java solution. Okay, please check here. Okay, and this is the Python solution. Please check here. Okay, it is almost same. Also, if you got the inputs in comma separated array like this, -1, 2, 3, 4, we already discussed how to split, right? We use the split function. We can directly split this array using comma. So using comma, you can split this. Okay, and also if there are extra white spaces, you can use the while loop. Okay, how to take coding input, in that video we already discussed about this, so I don't think so that in taking the input there should be any issue. Thank you so much for watching. Hi everyone, so this was the second coding question which got asked today in 26th March morning shift. Okay, so we will be solving this. Okay, first of all I want to discuss about this. See, I don't know because I was not giving the exam, but if the recursion logic
was working for this question, then this question is easy. And if the recursion logic was not working for this, then there is a concept called cycle that we will be discussing in this video. So that solution, I would say, will be little bit difficult to find out for the students who never solved the questions which are related to cycles. Okay, because this question was based on cycles. Okay, so if you have never studied about cycles, then this question can be felt difficult. But if the recursion logic was working in this question, like the logic was passing the test cases, then I think this question is easy. Okay, so I will be talking about both the test cases. Okay, so basically this question says we have an input like this. Okay, okay, so before going ahead with this, we have a mock test series which is TCS NQT mock test series. There are a lot of live tests which are going through, so you can go through it. The link of the mock test series will be in the description. You can attempt the live test before your exam if you have your exam on 1st April, 3rd April, or in the April month. And these live tests will help you out to actually perform well in your exam, because the questions will be very similar what TCS will ask in your actual exam. Okay, so the mock test series will link will be in the description, which you can use for your preparation. So let's discuss about this. So see, basically this question says a array A, the formation is 10, 20, 50 and 40. For array B, the formation is 50, 20, 40 and 10. Okay, we need to transform the eighth array in eighth B array of B. Okay, and basically when we want to transfer, we will be doing the swaps. We will be swapping, and we want to find out the minimum operations. Okay, so if I will perform the swapping operation, what I can do is I can check here. Okay, I can check here 50. Okay, if you will see here. Okay, so 50 I can swap here with with 40, right? So one swap will be this, so it will be 10, 20, 40 and 50, right? So this is the first swap. Second swap I can do is I can swap 10 with 50. Okay, so it will be 50, 20, 40 and 10. So this will be my two operations. Okay, this will be my two operations. Okay, in these two operations, I can transform this array A into the array B. This was the question. Okay, so two operations will be required. I can swap any two elements. Okay, so minimum operations we need to find out. So two operations will be there. Okay, now see, if we want to implement the recursion logic, I think the recursion logic is very easy. Okay, and based on that, if the TLE error was not there in the exam, then I think this question is easy. If the TLE error was there, I don't know about it, then this question is tough. Okay, so the array is saying 10, 20. What is the array? 10, 20, 50, 40. Okay, 10, 50, 40. This is the eighth array. Okay, and our bth array is 10, oh sorry, 50, 20, 40 and 10. Okay, so by using the recursion array, what we can do is, okay, I will run my recursion logic here. I will run my recursion logic here. Okay, and I will swap the elements. Okay, I will swap the elements and I will be counting the operation. So what I will be doing here, I will be matching the index. Okay, I will be matching the index. So if I will make the index of this, then this is 0 index, 1 index, 2 index, or 3 index. Okay, now based on these index, I will be checking with these elements. Okay, so 50 will be on third index, so it will be 3. Okay, 20 is on second index, it will be 2. 40 is on fourth index, it will be 4. And 10 is on first index, so 1. Or I can say it is 0, 3, 0 based indexing, 1 and 2. Okay, so this is the index of B based on A. Okay, now based on this index, okay, in recursion I can swap the elements. Okay, based on the index, right? So swap 0 with 2, right? Swap 0th index with second index. Okay, so I can swap this and I can do count plus plus. And then I will again pass the whole array in my recursion function. And that way I will be computing the minimum operations.
Okay, I will be making one variable which is minimum operation, which will be storing all the swaps, which I will be passing in the function, and that will store our final count. Okay, but this approach will take a lot of time complexity, right? I hope the approach is simple and clear, but it will take a lot of time complexity. So I am not sure if it will work or not. So we will be discussing the approach which is called cycle. Okay, cycle detection. So see, if you have done any question previously related to cycles, okay, I think this approach will be easy to you. If you don't know how to detect the cycles in the array, okay, then this approach can be felt difficult to you. Okay, so basically there is a concept called cycle. I will be not going in too detail, but a cycle concept is there in the arrays when some elements are pointing out the other element, and they again are pointing out to some other element. Okay, for example, if I will convert the indexes here, so again, if you will see here, this is zeroth index, this is 1, it is 2, and it is 3. Again, if I will convert the indexes from here, it is second index, it is 1 index, it is third index, and if it is zeroth index. Okay. So actually at the place of 0, it should be 2, right? If we will do the swaps. So at the place of 0, it should be 2. At the now, if I talking about 2, so I will go to the 2 and I will check here. At the place of 2, it should be 3. Okay, it should be 3, right? And at the place of 3, it should be 0. So now if you can see here, at the place of 0, it should be 2. At the place of 2, it should be 3. And at the place of 3, it should be 0. So this is a cycle, right? This is a cycle. Okay. And if the input is long, there can be multiple cycles like this. Okay. And if we want to sort out this cycle, like we have 0, 2, 3. Okay. We have cycle between this. Okay. How many elements are there? Total 4 elements. If we will see in the cycle size is 4, right? But how many elements are there? Total 3 elements are there, right? So how many swaps actually it will be requiring? It will be requiring elements minus one swap. Okay, elements minus one swap. Okay, why? See, if I have three positions and I want to settle down A, B, C on these three position, okay, and these on these three position I want to settle down A, B, C. If I will decide where A will be sitting, where B will be sitting, automatically the place of C will be there. Okay, so only we need to decide two places, right? So that's what we will be doing here. If we will be arranging three elements, in the arrangement of three elements, if we will be doing two swaps, for the third element, automatically it will be on the correct position. Okay, so that's why the count of the swaps will be 2, right? So for this cycle, if you will see here, the count will be 2. Okay, because see, we have three elements 0, 2, and 3, and if we will place 2 and 3 at the right point, automatically 0 will be following the right place, right? That's why the value of the swaps will be 2. Total number of elements minus 1. Okay. Okay, so after swapping these 0, 2, and 3, our array will be in the correct manner like B. Okay, so the final answer will be 2. This is called the cycle concept. Okay, and yes, there can be the multiple cycles, but the thing is, if there are multiple cycles, suppose there is a cycle like this, okay, like 0 is pointing 2, 2 is pointing 3, 3 is again pointing 0. Then again we have a cycle, suppose 5 is pointing to 7, 7 is pointing to 8, 8 is pointing to 6, and 6 is pointing to 5. Again, this is a cycle. Okay, suppose these two cycles are there in a big input. So the count from this, okay, will be 2, and the count from this, like 4 elements are there, will be 3. So total number of swaps required in this array will be 5. Okay, 3 plus 2. So this logic we will be using here. Okay, the cycle detection thing we will be doing here, and this is the optimized logic. I hope the logic is clear, but I just wanted to clarify you with the example once again. Okay, so it will make more sense. Our eighth array, the value of eighth array is 10, okay, 20, 50, and 40. Our value of bth array is 50, okay, then 20, 40, 10.
Now listen me carefully. First of all, we will be finding out the positions of this, and we will be mapping the position to the bth array. Okay, so 10 is on 0, 20 is on 1, 50 is on 2, and 40 is on 3. If I will do the mapping of the position, see the position of 50. 50 is on 2 position, so 2 will be mapped here. On 21 will be mapped here. On 43 will be mapped here. And on 10, 0 will be mapped here. I will start with index 0. Okay. I will start with index 0 and I will check if the element is at the proper position. So if I will say here, so on the zeroth position, it should be the second element. Okay, because see here the mapping. Okay, on 0 it should be second. Okay, so I will start from here. Okay, and okay, on the zeroth it should be 2. Okay, so I will increase my cycle here. Okay, if it should be 2 here, I will be directly going to the 2 position. Okay, second position. So when I will go to the 2 position, I am just visiting to the position and I am counting the total number of elements. So here, if you will see here, the total number of elements here is now 2. 0 and or you can say count here is 1, the length of the cycle. Okay, the length of the cycle is 1 here. Okay, from 0 to 2. Okay, now I move to the second position. On the second position, if I will see the mapping, it is pointing to 3. Okay, it is pointing to 3. Okay, so 2 is pointing to 3, so I will go on third position here. If I will see here on the third position, it should be 0, so 3 again is pointing to 0. Okay, so now see the length of cycle. The cycle length is 1, 2 and 3. Total 3 length is there between the cycle. Okay, if the length of the cycle is 3, okay, the swaps required will be 2. So my count of the swaps will be now 2. Okay, now I have count 2. Okay, after this count 2, okay, after this count 2 and after all these swappings, I will check from here. Okay, and every swapping, when every swapping is done, okay, when every swapping is done, basically if every swapping is done, and I will be checking if all elements are visited. Okay, so right now if you will see here, we have visited the 0th index, so we will mark this as visited. Okay, we will visited second index, so we will mark this as visited. We have visited the third index, so we will mark this as visited. Any index left, first index, this is left. So now we will check here on the first index that is it visited or not. So it is not visited, but now we will be checking the position. At the second index, it is 1 and the position is 1. So both are same. If both are same, no cycle detection required. We will move with the another element, the next element, but this is already visited, this is already visited. So our array is completed and our final answer is 2. Total number of swap required are 2. Okay, so this is the logic here. I hope you guys got it. If you have not got it, again please watch this video again. Now let's talk about this. So whatever we have discussed in the logic, we will be doing the same. First of all, we are mapping the position here. I have created one map. After creating the map, okay, I am assigning the position. Okay, so position, if you guys remember, we have assigned the position to the index right here. So 50 will be 2, 20 will be 1, 40 will be 3, and 10 here will be 0, right? So the same thing we are doing here. We are assigning at the position map all the indexes for b of I. Okay. After that, we have created one visited array, which we just discussed. The value of swaps is 0. Then we started our loop. We have checked. We are checking if the if the number is visited. Okay, if the number is visited and okay, and if the position is matching with the mapping position, so the 8th position is matching with bth position, we can continue our loop, right? And the element is visited. Okay, if it is not visited, the cycle size is currently 0. Okay, the cycle size is currently 0. Okay, we will be assigning the index value to our variable j. Then we will be running one loop. Okay, visited. Okay, from visited. So in this visited loop, we will be detecting our cycle. How we are detecting our cycle? We are starting our loop not visited. Okay, so suppose our cycle is like this: 0, 2, 3, then again 0, right? So we are starting with 0, right?
So currently it is not visited. Okay, then we will mark this as visited. Okay, after marking this as visited, which we have done here, okay, we will be going to the mapping position. So for 0 the mapping position was 2, right? So we are going from 0 to 2, so we are assigning that mapping position here to j. Okay, so the mapping position we assigned. Okay, after assigning the mapping position here, we are increasing the size of cycle, right? This is the thing which we have done. After that again, okay, we will be checking here if it is visited. So no, 2 is again not visited. Okay, so we will mark 2 as visited. After that again, from 2 we will be going to the mapping position. The mapping position of 2 is 3, so we will visit to 3. Okay, and we will be increasing our cycle size to 2. Okay, then from 3 again we will mark this as visited. Okay, from 3 we will be going to 0 again, because the mapping position of 3 is 0, so again we will be going to 0. But 0 is now visited, we will be doing cycle plus plus, so the size of cycle will be now 3. But 0 is visited, so this loop will be ended, so our cycle will be looking like 0, 2 and 3. Now cycle size is 3, so number of swaps will be required, will be cycle size minus 1, so the number of swaps required will be 2. Okay, and that way we will be returning our final swaps. Okay, so and this loop will continue, the I loop will continue, going to check the multiple cycles. Okay, at last we will be returning our swaps, and this will be our final solution. So I hope the logic is clear, and if you have any doubt, see, from my side I tried my best to explain in the simplest way. This concept is not easy. If you are finding it difficult, please watch this video again and you will be getting it. This is the Java solution, and this is the Python solution. Okay, thank you so much for watching. हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो कोडिंग क्वेश्चंस को, जो कि 1 अप्रैल को आए थे, और इस वीडियो में ही सॉल्व करवा देंगे इन दोनों कोडिंग क्वेश्चंस को। देखो, जो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन है ना, ये वाला, अगर मैंने जो एग्जाम एनालिसिस की जो वीडियो डाली थी वो आपने देखी होगी, उसमें भी सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया है हमें इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बट जो मेन चैलेंज था इस क्वेश्चन में वो था इनपुट लेना। ठीक है, अब उसके लिए हमने वीडियो अपलोड करी हुई थी ऑलरेडी, और ये सेम सेम चीज बताई हुई है कि इनपुट में कैसे लेना है। प्लस हम लोगों ने अपने कोर्स में भी एक शीट प्रोवाइड करवा रखी है बच्चों को। ठीक है, अगर आप वही कोड कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, तो वो इसमें रन कर जाएगा। तो बच्चों ने अप्रिशिएट किया था उसके लिए काफी। बाकी अभी तक भी जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया ही है मॉक टेस्ट सीरीज के लिए। तो अगर आपका एग्जाम आने वाला है फ्यूचर में टीसीएस एनक्यूटी के लिए, बहुत मिनिमल प्राइस पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट की। ठीक है, बाकी प्लस आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा। अगर आपका 9 अप्रैल को एग्जाम है, आपका 22 को एग्जाम है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल सिमिलर जो टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम है वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। प्लस आपको बहुत सारे अदर चीजें, प्रैक्टिस सेट्स, कोडिंग क्वेश्चंस की जो शीट है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। सो यू कैन परचेज लिंक ऑफ दिस टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, विच विल हेल्प यू अलॉट फॉर योर प्रिपरेशन। ये मॉक टेस्ट की सीरीज होने वाली है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये क्वेश्चन कहता है, ये फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन था जो कि आया था। ठीक है, 1 अप्रैल के एग्जाम में इसमें लिखा है, इन कोडिंग फर्स्ट क्वेश्चन वाज गिवन अ इनपुट फॉर अ मिनिमम चार्ज रिक्वायर्ड फॉर अ लैपटॉप व्हिच इज वर्किंग, एंड सेकंड लाइन इज अ एरे इन व्हिच हाउ मच लैपटॉप इज चार्ज गिवन, वी नीड टू प्रिंट द नंबर ऑफ लैपटॉप दैट कैन वर्क। अब जैसे इसमें दिया है 5, ठीक है, कि भाई एक चार्ज दिया है कि 5% की जो बैटरी है वो लैपटॉप में होनी चाहिए, तभी आपका लैपटॉप चलेगा। अब ये अलग अलग लैपटॉप्स दिए, लाइक 2, 3, 6, 7 एंड 1। तो कितने लैपटॉप्स अभी चलेंगे? तो एक तो 6 चलेगा और 7 चलेगा, क्योंकि जो 6 है और 7 है वही 5 से बड़ा है। मतलब 5% बैटरी से ज्यादा बैटरी 6% है और 7% है, राइट? तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 2, कि 2 लैपटॉप्स हैं जो कि चल पाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर हमें बस ये बताना है कि जो भी नंबर दिया है हमें n, ठीक है, वो नंबर से कितने ज्यादा नंबर है जो कि एरे में प्रेजेंट है, विच आर ग्रेटर देन दैट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 5 है, तो 5 से बड़े दो ही नंबर हैं, 6 और 7। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम चेक करते जाएंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन एन। ओके, तो हमें क्या करना है, काउंट करना है प्लस प्लस, और लास्ट में ये काउंट को हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, इससे टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स जितने भी हैं जो जो रिक्वायर्ड हैं, जो कि चल पाएंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम क्या थी, इनपुट। जो एरे का इनपुट दिया है वो दिया था स्ट्रिंग में। सो 2 3 6 7 1 ये था इनपुट स्ट्रिंग में। अब बच्चे यहीं पर मात खा गए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं देखी थी हमारी वीडियोस या फिर उनने मॉक टेस्ट नहीं परचेज किया था, उनको प्रॉब्लम आ गई। बट इसके लिए ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस प्रकार के इनपुट्स कैसे लेते हैं। यही हमें मेन चीज है जो डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। पहला ही क्वेश्चन हमने दे रखा है स्ट्रिंग फॉर्मेट एरे अपने इस शीट के अंदर, जो शीट हमने प्रोवाइड करवा रखी है कोर्स के अंदर। पहला ही क्वेश्चन ये है, स्ट्रिंग फॉर्मेट एरे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। तो यही तो इनपुट लेना था। तो पाइथन में अगर आप देखोगे तो इनपुट डॉट स्प्लिट कर सकते हो, स्पेस से स्प्लिट हो जाएगा इनपुट, तो अगर आप देख सकते हो तो ऐसा आ जाएगा। बाकी फिर आप इसको मैप कर सकते हो बाय इंटीजर। ओके, सो मैप कर दिया इंट, एंड उसमें हम पास कर देंगे अपने इनपुट को, एंड फाइनली वी विल गेट अवर फाइनल एरे लाइक दिस। ओके, जावा के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले आप स्कैनर ले लोगे, उससे आप नेक्स्ट लाइन से रीड करोगे, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रिंग लाइन हमने क्रिएट कर ली, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन बनाया, एंटायर जो लाइन है वो रीड हो जाएगी। फिर लाइन को स्प्लिट कर लेंगे बाय स्पेसेस, एंड उसको हम अपने एरे में स्टोर कर लेंगे। अब ये जो एरे है वो स्ट्रिंग का बनेगा, फिर इसको हम यहाँ पर पार्स इन फंक्शन के का यूज करके अपने एरे में स्टोर करते चले जाएंगे और इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। एक एरे बना लेंगे इंट एरे, और इंटीजर नंबर्स को स्टोर कराते चले जाएंगे बाय कन्वर्टिंग दैम टू इंटीजर, जो भी हमारा स्ट्रिंग्स में आया। ठीक है, लास्ट में प्रिंट करवा देंगे। फिर अपन का आता है अपना सी प्लस प्लस का कोड। तो सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग लाइन हमने क्रिएट कर ली, गेट लाइन फंक्शन का यूज करके पूरी की पूरी लाइन को हम रीड करेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रीम का हम यूज कर सकते हैं, फिर एक वेक्टर बना लेंगे एरे, और स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज करके इस प्रकार से व्हाइल लूप लगा के आप अपने वेक्टर में जितने भी नंबर्स हैं उसको पुश करवा सकते हो। अगर आप इस प्रकार से पुश करवाओगे डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इनपुट को रीड कर सकते हैं। इससे हमारा जो प्रॉपर इंटीजर एरे है वो यहां पर बन जाएगा, एंड बाद में हम अपना फॉर लूप लगा के ये कंडीशन चेक करके जो अभी हमने डिस्कस करी थी काउंट को रिटर्न कर देंगे। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एंड रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इनिशियली हैप्पी इन हैप्पी स्टेट। ठीक है, सो सपोज एक इंटीजर वैल्यू दी है n। ठीक है, सपोज 100। तो ये जो 100 लोग हैं ये अभी करंटली क्या है, हैप्पी हैं, खुश हैं। अब एक इटरेशन होगी, एक इटरेशन में सबसे पहले जो 70% ऑफ हैप्पी पीपल है वो सैड हो जाएंगे, और 30% हैप्पी हैप्पी ही रहेंगे। मतलब 100 में से 70 जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, सैड, और 30 रहेंगे हैप्पी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, 50% ऑफ सैड रिमेन सैड एंड 50% ऑफ सैड बिकम हैप्पी। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनिशियल स्टेट में यहां पर आपको दिए हैं हैप्पी पीपल, और स्टार्टिंग में तो सारे ही हैप्पी हैं, तो अभी तो कोई सैड है ही नहीं, राइट। तो अगर अभी कोई सैड नहीं है तो अभी तो जीरो ही रहेगा, राइट। अब न्यू हैप्पी क्या बन जाएगा, न्यू हैप्पी बन जाएगा 30, ये हो गया न्यू हैप्पी, राइट। 30 हो गया अब आपके नए हैप्पी पूल। अभी करंट स्टेट में 30 हैप्पी हैं और 70 हैं सैड। ठीक है, अब अगेन इटरेशन चालू होगी जिसमें 70% हैप्पी क्या बन जाएंगे, सैड बन जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो 30 ये अपन के जो हैं ये अपन के क्या बन जाएंगे, अपन के ये अपन के बन जाएंगे 30 अभी अपन के न्यू हैप्पी हैं, ये सैड बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से 70% हम घटा देंगे, वो अपन के सैड बन जाएंगे। ऐसे हमें 4 इटरेशन चलानी है, और जो 30% ऑफ हैप्पी हैं वो यहां पर हैप्पी ही रहेंगे। ठीक है, 30% ऑफ हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो इसका 30% आपका हो गया 10 लोग। तो जो 10 लोग हैं वो यहां पर हैप्पी ही रहेंगे। ठीक है, 10 लोग यहां पर हैप्पी ही रहेंगे, लगभग अपन एक अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं। और जो 20 लोग हैं वो यहां पर क्या हो जाएंगे, सैड आउट ऑफ 30। अब ये जो 70 लोग हैं जो सैड है उसमें से 50% तो सैड ही रहेंगे, मतलब 70 में से 35 हो गए जो कि सैड है, और जो 50% है वो हैप्पी हो जाएंगे, मतलब 35 ही हैप्पी हो जाएंगे। तो अब अगर आप हैप्पी देखोगे तो कितने हो गए टोटल, 10 पुराने वाले 35 है, टोटल हो गया 45। 45 हो गए हैप्पी, और अपन के ये बाकी के रिमेनिंग 55 हो गए सैड। तो इस प्रकार से 4 इटरेशन चलेंगी न्यू हैप्पी न्यू सैड की, और उस हिसाब से हमें लास्ट में ये बताना है कितने पीपल सैड है और कितने हैप्पी है। तो सबसे पहले तो हमने काउंट ले लिया, हैप्पी कितने हैं, एन। स्टार्टिंग में तो इनिशियली एन लोग मतलब पूरे 100 के 100 हैप्पी हैं। फिर सैड कितने हैं, जीरो। ठीक है, तो सैड अभी स्टार्टिंग में जीरो है। फिर 4 इटरेशन हमें चलानी है, तो हमने लूप चला दिया जीरो से लेकर 4 तक। न्यू हैप्पी क्या हो जाएंगे, न्यू हैप्पी नए पीपल, देखो 30% जो लोग हैं वो हैप्पी हो रहे हैं, बाकी के सैड हो जाएंगे, राइट। तो जो न्यू पीपल जो हैप्पी हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 0.3 मल्टीप्लाई बाय हैप्पी। आप देख लो ना, 100 में से कितने हैप्पी हुए, 100 में से कितने हैप्पी हुए,
30, राइट, क्योंकि 30% ही तो हैप्पी बच रहे हैं। तो 0.3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 में से 30 हैप्पी हो गए, प्लस 0.5 और टोटल सैड पीपल, क्योंकि ये भी तो कंडीशन दी है जितने सैड है उसमें से 50% हैप्पी हो जाएंगे। इनिशियली तो जीरो है बट बाद में तो बढ़ेंगे ना सैड पीपल, तो जो 50% सैड है वो हैप्पी हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय सैड, इतने अपन के नए हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। और नए सैड क्या हो जाएंगे, नए सैड क्या हो जाएंगे, 0.7% ऑफ हैप्पी। पहले अगर जैसे 100 थे तो 100 में से 70%, लगभग 70 हो गए अपन के सेड, और जितने भी सेड थे उसमें से 0.5%, मतलब 0.5 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50% सेड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 इटरेशन चलेगी। अब जो हैप्पी है वो न्यू हैप्पी हो जाएगा, सेड न्यू सेड हो जाएगा। इस प्रकार से 4 इटरेशन चलेंगी और लास्ट में हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि कितने सेड है कितने हैप्पी है। लास्ट में हम उसको प्रिंट करवा देंगे, सेड को और हैप्पी को। तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है, बस यही कैलकुलेशन करनी थी, एंड या दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। So these are the solution for the coding questions got asked on 1st of April. बाकी link of the mock test series will be in the description, which you can use for your preparation if you have your TCS NQT exam. Thank you so much for watching. हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 3rd अप्रैल के कोडिंग क्वेश्चंस को जो टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में आए थे। अगर आप लोगों को पता है तो 3rd अप्रैल को यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्जाम था वो कंडक्ट कराया गया था। एंड अगर आपका जो एग्जाम है वो अगर आपका होने वाला है अप्रैल के मंथ में या आगे कभी भी अगर आपका एग्जाम होने वाला है, ये जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आपके हेल्प आउट करेंगे एक पता लगाने में किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन टीसीएस में आ रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, लेट्स सॉल्व ऑल द कोडिंग क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर 3rd अप्रैल को आए थे। प्लस यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी, सो यू कैन परचेज अवर मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास प्रिपरेशन का समय कम है तो आप लाइव टेस्ट दे सकते हो। ये जो लाइव टेस्ट है ये एक्चुअल टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम जैसे ही है, आपको इसी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एक्चुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। सो यू कैन एनरोल इन अवर मॉक टेस्ट सीरीज। प्लस लाइव टेस्ट के अलावा आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस शीट्स वगैरह मिल जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो यू कैन परचेज इट। लाइव टेस्ट अभी लाइव है, इसमें आप अपनी रैंकिंग भी देख पाओगे कि आपकी क्या रैंक आ रही है, ठीक है। और एग्जाम से सिमिलर होंगे, सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग आउट टू प्रिपेयर एंड सी योर रैंक्स, ओके। सो टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो था उसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको जो डिस्टेंस है वो मीटर में दी है, टाइम दिया है सेकंड्स में, ठीक है। मीटर में दी है डिस्टेंस और टाइम दिया है सेकंड्स में। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड। एंड देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। एस इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय टी, ये यहां पर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 0.001 किलोमीटर, ठीक है। और एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये सेकंड दिया हुआ है, सॉरी ये घंटे में कन्वर्ट करना है, सॉरी। एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, ठीक है। एक सेकंड में होते हैं 1/3600। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। एक मीटर में 0.001 किलोमीटर हो गया, एक सेकंड में 1/3600 आर हो गया, ठीक है। अब अगर ये चीज हमें समझ में आ गई, ये चीज हमें समझ में आ गई, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई अपन की, 0.001 डिवाइड बाय, यहां पर मैं कह सकता हूं 1 डिवाइड बाय 3600, राइट। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा यहां पर, ओके, 3600 मल्टीप्लाई बाय 0.001, ठीक है। इस पॉइंट को जरा यहां पर हटा लेते हैं और इस जगह पे पॉइंट लगा लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर 3.6, ठीक है। यहां पर अगर आपको पर स्पीड को कन्वर्ट करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई यहां पर करना पड़ेगा, ठीक। तो सिंपल हो जाएगा अपन का, जो भी डिस्टेंस आपकी मीटर में दिया है, जो भी टाइम आपको सेकंड में दिया है, उसको आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आने वाला है d डिवाइड बाय t मल्टीप्लाई बाय 3.6। बस ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब इसमें इनपुट में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी वो मुझे पता नहीं है। अगर इनपुट में कोई प्रॉब्लम हो, अगर स्ट्रिंग में इनपुट है आपका, तो आप कैसे ले सकते हो, ये चीज आपको पता ही होगी। पहले अगर सपोज आपको डिस्टेंस दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, सबसे पहले जो स्ट्रिंग है इसको इनपुट में ले लेना। इसको स्ट्रिंग को इनपुट में लेके इसको स्पेस स्पेस से स्प्लिट कर लेना। और स्पेस से जब आप स्प्लिट कर लोगे तो स्पेस से स्प्लिट करने के बाद जो फर्स्ट
वैल्यू है उसको आप एक इंटीजर डी में स्टोर करके, इंटीजर डी में स्टोर करके इसको इंट में कन्वर्ट कर लेना, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। तो उससे ये आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। एंड जो सेकंड वैल्यू है उसको टाइम में स्टोर कर लेना, ठीक है, इंटीजर में। जब ये सब आपके पास आ गया इनपुट में, उसके बाद अपन को बस स्पीड कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? डबल स्पीड इक्वल टू फॉर्मूले में रख देंगे डिस्टेंस बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 3.6, यही हमने कैलकुलेट किया। लास्ट में स्पीड को प्रिंट कर देंगे, रिटर्न करा देंगे, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कराना था। थोड़ा बहुत कन्वर्जन और इनपुट में ही प्रॉब्लम हो सकती थी बच्चों को, ठीक है। ये सेम कोड है जो है जावा में है, ठीक है, कुछ इसमें खास रेफरेंस नहीं है। सेम कोड यहाँ पर पाइथन में दिया है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गिवन एन इंटीजर अरे फाइंड द मैक्सिमम सब एरे सम यूजिंग कैडेंस एल्गोरिथम आल्सो प्रिंट दैट सब एरे। अब भैया जो कैडेंस एल्गोरिथम है, पता नहीं क्यों टीसीएस को बड़ा प्यार है इससे, कैडेंस एल्गोरिथम से, पता नहीं क्यों भाई। कैडेंस भाई तो पेपर नहीं बना रहे टीसीएस का, क्योंकि कैडेंस एल्गोरिथम यहाँ पर 2025 के ऑफ कैंपस में भी आई थी। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन यही आया था, ठीक है। और 2025 ऑफ कैंपस टीसीएस एनक्यूटी में भी तो दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 2026 के एग्जाम में। कैडेंस एल्गोरिथम से मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली कैसे हैंडल करते हैं इस क्वेश्चन को। कैडेंस एल्गोरिथम क्या होती है, तो देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, मैं आपको एक सिंपल तरीका समझाऊंगा कैडेंस एल्गोरिथम क्या होती है, सब एरे सम कैसे निकाल सकते हैं। सो बेसिकली हमें सब एरे का सम निकालना है इसमें, ठीक है। हमें क्या निकालना है? सब एरे का सम, ठीक है। -2, -3, 4, -1, -2, 1, 5, -3। कैडेंस एल्गोरिथम के केवल दो रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर वैल्यू सम की बढ़ रही है, अगर सम की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो बढ़ाते जाओ, तो बढ़ाते जाओ। अगर वैल्यू सम की घट रही है तो रुक जाओ। सिंपल। अगर वैल्यू सम की बढ़ रही है तो बढ़ाते जाओ, और अगर वैल्यू सम की घट रही है तो रुक जाओ। बस इतनी दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सो आई होप कंडीशंस आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब जो कंडीशंस हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं जरा। तो सबसे पहले तो हमारे लिए मैक्सिमम सम जो है वो -2 ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैक्सिमम सम है वो तो -2 हो गया क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स है। फिर आया -3। अब हम इसको करंट सम में जोड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने किया -2 प्लस -3। अब इन दोनों का अगर आप इसमें अगर सम निकालोगे तो क्या हुआ? इसका सम हुआ -5, ठीक है। तो ये सम बढ़ा या घटा, बस ये चीज आप याद रखो, ठीक है। सो अगर ये जो सम है ये यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो करंट इंडेक्स से आप इसको मैच करते जाओ कि जो भी हम करंट इंडेक्स पे हैं उससे ये जो सम है ये बढ़ रहा है या घट रहा है, बस ये चीज तो हमने बोली थी। यही बस दो रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि अगर जो सम है वो बढ़ रहा है तो बढ़ाते चले जाओ, और अगर घट रहा है तो उसी वक्त रुक जाओ। तो अब अगर आपने -2 और -3 कराया तो यहां पर कितना आ गया? -5, ठीक है। कंपेयर करो करंट इंडेक्स से। अगर आप करंट इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो करंट इंडेक्स है -3, तो ये जो समय ये कम है, जो -3 है उससे कम है, तो इसको ये जो समय वो हमारा घट रहा है। तो अगर सम घट रहा है तो अब हम -3 से यहां पर अपना सवेरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अगला सवेरे ले लेते हैं, ठीक है। तो -3 अभी हम जो यहां पर जो हमारा समय ये घट रहा है, तो -3 से अब स्टार्ट करेंगे। अब हमने किया -3 +4 अगला एलिमेंट, ठीक है। अब -3 के साथ हमने +4 किया, ठीक है। अब -3 +4 किया, करंट इंडेक्स क्या है? 4, ठीक है। और इसको अगर आप कंप्यूट करोगे तो कितना आएगा? 1, ठीक है। अब जो करंट सम है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? करंट इंडेक्स से कंपेयर करो, करंट इंडेक्स ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये जो सम है ये घट रहा है। तो अगर ये सम घट रहा है तो यहीं पे हम रुक जाएंगे और करंट इंडेक्स को ले लेंगे, विच इज यहां से अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। अगला जो एलिमेंट है वो जोड़ते हैं। तो अब क्या हो गया हमारा? 4 से स्टार्ट किया, 4 आया, फिर 4 -1 तो 3। करंट इंडेक्स से कंपेयर करो, करंट इंडेक्स क्या है? -1, और ये क्या है? 3, ठीक है। मतलब जो भी करंट इंडेक्स है उससे सम ज्यादा है। तो अगर उससे सम ज्यादा है करंट इंडेक्स जो भी है तो हम इसको अभी रखेंगे। फिर आया -2, -2 इसमें किया तो कितना आया यहां पर? 1। तो करंट इंडेक्स क्या है? -2, और ये है 1। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये अभी जो भी करंट इंडेक्स है उससे ये बड़ा है, -2 से ये बड़ा है, तो इसको हम रखेंगे। फिर आया हमारे पास 1। तो 1 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना आ गया? 2, ठीक है।
तो 2 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अभी भी हम इसको रखेंगे। फिर हमारे पास आया 5, तो 5 को इसमें हम जोड़ेंगे, 5 जोड़ा कितना आया 7। करंट इंडेक्स क्या है 5, तो ये बड़ा है कि छोटा है, 7 इससे बड़ा है, तो अभी हम इसको रखेंगे, ठीक है। और फिर आया हमारे पास -3, तो 7 में से हमने यहां पर ये कर दिया -3, तो ये कितना आया 4। तो ये बड़ा है कि छोटा है, करंट इंडेक्स से बड़ा है, तो भी हम रखेंगे। बट इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आई सम की, वो क्या निकल के आई, सबसे मैक्स वैल्यू जो सम की निकल के आई, वो निकल के आई 7 इस पूरी प्रोसेस में, राइट यहां पर। तो जैसे ही कोई भी वैल्यू, जब जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आती है, हम हर हर लूप में वो चीज चेक करते रहेंगे और मैक्सिमम सबको हम स्टोर करवाते चले जाएंगे। एंड उस पॉइंट पर हम उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहां से हमारा सम चलना चालू हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा बढ़ा ही नहीं, 4 पे तो था स्टार्टिंग पॉइंट, तब से तो हमारा बढ़ा ही नहीं ना। तो स्टार्ट वाला पॉइंट क्या था यहाँ 4 वाला, तो ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज आई हो गया हमारा। और एंड इंडेक्स क्या था, जहां पर हमारा मैक्सिमम सम आया इस जगह पर, राइट, तो ये हो गया जे इंडेक्स। सो इस आई से जे के बीच में जो भी हमारा सब एरिया है, ये हमारा मैक्सिमम सम एरिया है, और इसमें हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड में हमारा ये वाला चीज स्टोर हो जाएगी, जो भी हमारा था मैक्सिमम, जहां पर भी वैल्यू आ रही थी यही 7 आ रही थी। सो बेसिकली यहां से लेके यहां तक का ये जो सब एरिया है हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसका सम अगर आपको प्रिंट करवाना है तो सारे एलिमेंट्स को आप जोड़ सकते हो, लाइक 4 -1 -2 +1 एंड 5। तो इसका सम अगर आप देखोगे तो यहां पर आ जाएगा 7, एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम सम एरे सम। और आई और जे इंडेक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर है। अगर सम हमारा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, करंट इंडेक्स से, तो हम उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जिस वक्त पर करंट इंडेक्स से हमारा सम छोटा हो जाएगा, उसी वक्त हम रुक जाएंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा वो बन जाएगा। सिंपल यही करना है, और कुछ नहीं करें इंसर्ट कर, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। सो 3 अप्रैल के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आए गए थे, पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, एंड अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर आपका टीसीएस का एग्जाम है, सो यू कैन परचेज द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। द थिंग इज कि अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो इसमें आपको लाइव टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, एंड ये जो लाइव टेस्ट है, यस दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द एक्चुअल असेसमेंट, क्योंकि अभी तक जितना भी एक्चुअल असेसमेंट हुआ है, हर बच्चे ने यही बोला है कि भैया ये जो लाइव टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अल्ट्रा हेल्पफुल है। सो अगर आपका टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम आ रहा है, तो आप ये जो लाइव टेस्ट हैं इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपको मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। बट अभी आपके पास, अगर आपको ऐसा लगता है कि समय कम है, तो आप यहाँ पर लाइव टेस्ट पर फोकस कर सकते हो। प्लस आपको कोडिंग शीट्स वगैरह देखने को मिल ही जाएंगी, ठीक है। सो डेफिनेटली इफ यू वांट यू कैन एनरोल इन आवर मॉक टेस्ट सीरीज, प्लस द डिस्काउंट का जो कूपन कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो था वो था मिन एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। अब इसमें क्या है कि एक एरे दिया है, ठीक है, अपन को एलिमेंट विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड एलिमेंट विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो एरे है, एरे हमारा देखने में हमको मिल रहा है 1 2 2 3 3 3 एंड 4, ठीक है। अब इसमें हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमें इसमें बताने हैं। कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीका है, एक मैप बना लेते हैं, और मैप में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, ठीक है। मैप में फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। अब मैप हमें पता ही है क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर यहाँ पर स्टोर करता है। तो की में क्या आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी में, वैल्यू में उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1, तो 1 स्टोर हो जाएगा मैप में। एंड अगर आप इसमें पूरी बार देखोगे तो कितनी बार एलिमेंट आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो एक आ जाएगा, इसके सामने स्टोर हो जाएगा। 2 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, की में 2 स्टोर हो जाएगा, और वैल्यू में 1 2 दो बार स्टोर आ रहा है, तो दो बार, दो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। 3 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 3 बार आ रहा है, तो 3 स्टोर हो जाएगा। और 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, तो 4 के सामने 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन से एलिमेंट्स की है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आ रहा था जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 है, तो एक हो जाएगा, ये मिनिमम एलिमेंट है विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सबसे पहले आया था। सेकंड एलिमेंट जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या है इसमें, 3।
3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना बन जाएगा आउटपुट में 1 एंड 3। 1 एलिमेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, 3 एलिमेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बस सिंपल सा आंसर है। मैप में स्टोरी तो कराना है और इंक्रीज करना है। आई आई होप ये चीज आपको आती ही होगी, राइट। सो सबसे पहले आप देख सकते हो इनपुट ले लेंगे, एरे ले लेंगे, एक मैप हमने क्रिएट कर लिया फ्रीक्वेंसी मैप, ठीक है। उसके बाद अपना लूप चला लेंगे, ठीक है। एरे में अपन इनपुट लेते जाएंगे प्लस अपन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे जो भी एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मैप कैसे फंक्शन करता है। आई होप ये सब चीजें आपको पता है, क्योंकि इसमें क्या ही बताऊं मैं, सिंपल ही है। तो फ्रीक्वेंसी जो भी मैप है उसमें हम एलिमेंट को स्टोर कराते चले जाएंगे प्लस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कराते चले जाएंगे। देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इंट मैक्स से असाइन कर लेंगे वेरिएबल में, और मैक्सिमम के लिए इंट मिन से। फिर मिनिमम एलिमेंट को अभी फर्स्ट एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट में भी अभी फर्स्ट एलिमेंट असाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते जरा, हम अपना जो मैप है उसमें हम इटरेशन चालू करेंगे। हम अपने मैप को इटरेट करेंगे, ठीक है। और चेक करते चले जाएंगे कि अगर कोई एलिमेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी से छोटा है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से हम उस एलिमेंट में मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम स्टोर कर लेंगे और मिनिमम एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट हम स्टोर कर लेंगे, जो भी एलिमेंट मिनिमम है, प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। ये दो चीजें हम स्टोर करवा के चलेंगे। सेम काम करेंगे मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम एलिमेंट में मैक्स एलिमेंट स्टोर कर लेंगे और मैक्सिमम एलिमेंट की क्या फ्रीक्वेंसी है वो हम मैक्स फ्रीक्वेंसी में स्टोर कर लेंगे। लास्ट में मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, सिंपल। और यहां से हमारा जो कोड है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जोसेफस प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपको इजी लगे, बट आई विल कंसीडर दिस क्वेश्चन एज मीडियम हार्ड, ठीक है। मीडियम हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है देखने में, और कोड इसका काफी ज्यादा इजी लग सकता है आपको, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मीडियम हार्ड है। अगर कोई व्यक्ति इसको करके नहीं गया है पहले तो डेफिनेटली मीडियम हार्ड लगेगा। इसमें बोल रहे हैं गिवन एन पीपल नंबर फ्रॉम 1 टू एन के एवरी केथ पर्सन इज डिलीटेड रिटर्न द लास्ट रिमेनिंग पर्सन। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 टू एन से नंबर है, सपोज जैसे मैं बोल देता हूं कि एन इक्वल्स टू 7 है एंड के इक्वल्स टू 3 है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि देखो एन, इसको बोर्ड पे समझते हैं, बोर्ड पे ही अच्छे से समझ में आ पाएगा, इसमें नहीं आएगा समझ में, ठीक है। ध्यान से सुनो, एन इक्वल टू 7 है एंड के इक्वल्स टू 3 है। इसका मतलब टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। हर तीसरा व्यक्ति हमें डिलीट करना है, हर तीसरा व्यक्ति। और वो कैसे डिलीट होगा वो ध्यान से सुनना। ये डिलीट नहीं करना, ये नहीं डिलीट करना, हर तीसरा व्यक्ति हमें डिलीट करना है। सबसे पहले ये डिलीट हो जाएगा, फिर इसका तीसरा 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा। अब दोबारा से ये चालू होगा, एक, फिर लौट के हम दोबारा इस पे आएंगे, 2 3 ये डिलीट हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा। लास्ट में कौन सा व्यक्ति बचा, लास्ट व्यक्ति कौन सा बचा, लास्ट में बचा 4। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। बेसिकली समझे क्या कर रहे हैं हम, हर तीसरा व्यक्ति हमें डिलीट करना है, वो लास्ट में जो भी व्यक्ति बचेगा तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसमें अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जिस प्रकार से ये चल रहा है इसको हम सर्कुलर वे में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार सेम ही चीज रिपीट हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, कि ये सर्कुलर टेबल में है, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर जब एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो घूम के हम सेम एरे पे आ रहे हैं, तीसरे पे, राइट। तो इसको हम सर्कुलर एरे की तरह यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। अब जब सर्कुलर एरे अगर हम लेंगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम सर्कुलर एरे पे कोई ऑपरेशन कराते हैं तो हमें मॉड्यूलस करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है, राइट। तो मॉड्यूलस कराते हैं हम साइज से, राइट। मॉड्यूलस से किससे कराते हैं हम, साइज से, जो भी एरे का साइज होता है उससे मॉड्यूलस कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर ये पूरा एरे है तो इस पूरे एरे में सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं सर्कुलर एरे है, तो मॉड्यूलस बाय एन हो जाएगा। फिर एक एलिमेंट डिलीट किया हमने, सपोज 3 डिलीट कर दिया आपने, ठीक है, 3 डिलीट कर दिया। सो अगर 3 डिलीट हुआ तो साइज भी तो एरे का कम हो गया। तो साइज अगर कम हो गया तो ये n-1 से मॉड्यूलस हो जाएगा, मतलब n अपने आप ऑटोमेटिकली यहां पर कम होता चला जाएगा जैसे जैसे एरे का साइज कम हो रहा है, राइट।
बट इसमें अब हम एक चीज करेंगे क्या, एक चीज करेंगे क्या, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कैसे करेंगे जोसेफस प्रॉब्लम में, वो ध्यान से सुनना। सो अब इसको हम सर्कुलर अंदाज में रखते हैं और आपको बिल्कुल क्लियरली अब समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसको एक बार सर्कुलर टेबल में भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखना, ये सर्कुलर हम अपने मन में एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा मन है और ये एक्चुअल है। अब इस एरे को हम कन्वर्ट करेंगे सर्कुलर में, कैसे करेंगे वो देखना। सबसे पहले तीसरा एलिमेंट हमें डिलीट करना है, तो 1 2 3 ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा, यहां पर भी ये वाला एलिमेंट, ये हम अपने मन में डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट जो हमारा 1 2 3 की जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, इस जगह से होगी 1 2 3 की काउंटिंग, राइट। तो अगर 1 2 3 की काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी और हमें इसको सर्कुलर बनाना है, तो जो भी एलिमेंट हमारे पीछे बचा इसको हम आगे ऐड कर देंगे। तो ये जो 1 2 है ना, ये यहां से हटके कहां पे लग जाएगा, इस जगह पे 1 और 2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो जो एरे बचा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, हमारे पास हो गया 4 5 6 7 1 2, और एन की वैल्यू इसमें थी 7 क्योंकि टोटल 7 एलिमेंट थे, और अब यहां पर जो एन की वैल्यू है वो क्या रह गई, 6, ठीक है। 6 एलिमेंट हो गए। अब यहां से हमारा चालू होगा, तो 1 2 3 ये एलिमेंट हटेगा, मन में हम सोच लेंगे 1 2 3 ये वाला एलिमेंट हटेगा, ठीक है। अब जब ये वाला एलिमेंट हट गया तो क्या बचा, 4 और 5 पीछे, राइट। इसको हम आगे यहां पर लगा देंगे क्योंकि ये सर्कुलर एरे है, राइट। सर्कुलर एरे ऐसे ही वर्क करता है, तो 7 1 2 4 और 5 ये यहां पर आगे लग जाएगा, ठीक है। और एन की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 5, ठीक। और 6 हटेगा। अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, हमारा जो भी एलिमेंट हटेगा ना उसके अगले पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, तो 2 हट जाएगा और 2 हट जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर भी अपन देख लो, अगर आप यहां पर काउंटिंग देखोगे तो 1 2 3, 2 हट गया, ठीक है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, और ये जो एलिमेंट्स हैं आगे लग जाएंगे, तो 7 1 यहां पर हो गया, ठीक है। तो 4 5 7, 7 हट जाएगा और 4 5 इसके आगे लग जाएगा, क्या बचा, 1 4 5, फिर 1 4 5, तो 1 2 3 5 हट जाएगा, बचा 1 4, इसके आगे लग जाएगा, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 1 हट गया, क्या बचा, 4। तो ये हमारा लास्ट में आंसर है। तो ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर सर्कुलर चल रहा है, सेम प्रोसेस हमारी इस पे जो हम मन में कर रहे थे ना, ये सर्कुलर में घुमा रहे थे, ये हमारी अब लीनियर में हो रही है ऐसे, ठीक है। लीनियर में हो रही है अब ऐसे, एक्चुअल में लीनियर है बट सर्कुलर में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखना, जी चीज जो हमने करी, इसको करने के लिए हमारे पास है तो लीनियर ही अरे, ठीक है। इसमें जो पिछले एलिमेंट्स हैं हम उनको आगे लगा रहे हैं। बस हमें इनका एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखो एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे नंबर है। इसको हम एक बार इंडेक्सिंग देख लेते हैं इसकी। ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये 2 पर है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है और 6 पे है। ये क्या है, इसके इंडेक्स हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमारा 3 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ तो 1 और 2 आगे लग गया, तो 1 यहां पे लग गया और 2 यहां पर लग गया, राइट। जब हमारा थर्ड एलिमेंट डिलीट हुआ तो ये यहां से हट गया और ये आगे लग गया। तो ये एलिमेंट जब आगे लग गया, ठीक है, ये एलिमेंट्स जो हमारे आगे लग गए, बेसिकली इसके जो इंडेक्स हैं वो भी हमारे आगे पहुंच गए, ठीक है। इंडेक्स भी हमारे आगे पहुंच गए। सो अगर अब हम अपना इंडेक्स देखेंगे हमारे एरे का, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि 2 3 4 5 6 0 1, ठीक है। तो हमारा जो इंडेक्स है वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हमारी जो काउंटिंग है एक्चुअली वो कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी, इस जगह से, राइट। ये जो इंडेक्स है हमारा डिलीट हो चुका है, यहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो थर्ड इंडेक्स है, अब यहां पर ये कैसे वर्क करेगा, 0th इंडेक्स की तरह। फोर्थ इंडेक्स कैसे वर्क करेगा, फर्स्ट इंडेक्स की तरह। फिफ्थ इंडेक्स कैसे वर्क करेगा, सेकंड इंडेक्स की तरह। सिक्स इंडेक्स कैसे वर्क करेगा, थर्ड इंडेक्स की तरह। 0th इंडेक्स यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। 0th इंडेक्स यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स की तरह। एंड वन इंडेक्स ये कैसे कर रहा है यहाँ पर, फिफ्थ इंडेक्स की तरह। तो हमारे ये जो इंडेक्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर अब कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये जो हमारे इंडेक्स हैं ये हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये जो इंडेक्स हमारे कन्वर्ट एक्चुअली में हुए हैं, ये कैसे हुए हैं वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका जो फॉर्मूला है वो पता है क्या है, ये जो आपके पास जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये चीज, ठीक है। इसको आप बोलो सपोज x, और ये है हमारा y, ठीक है। ये है y, मतलब ये है हमारे
और कन्वर्टेड इंडेक्स, ये है कन्वर्टेड इंडेक्स। एंड जो हमने काउंटिंग स्टार्ट करी है वो यहां से स्टार्ट करी है, ठीक है, ये हमारे इंडेक्स हैं, राइट, ये ओरिजिनल इंडेक्स है। अब x से y में कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली जीरो है, जीरो को हमें दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 में अगर हम आंसर चाहते हैं। सो बेसिकली इफ यू विल सी हियर, इट्स नथिंग बट x प्लस 3 क्या है। अगर आप इनके बीच में गैप देखो, इनके बीच में गैप देखो, 0 और 3 के बीच में 3 है, 1 और 4 के बीच में 3 है, 2 और 5 के बीच में 3 है। इट्स नथिंग बट x प्लस k का गैप है, राइट। बट अगर आप देखोगे तो 3 फिर 6 है एंड 4 के बाद फिर से 0 आ गया। सो 4 के बाद 0 क्यों आया, 4 के बाद 0 क्यों आया, ये बात हमें समझने वाली है। 5 के बाद 1 क्यों आया, क्योंकि अगर आप अब आप इसको इसमें कन्वर्ट करके देखोगे ना, इट्स 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट x प्लस के, ठीक है, x प्लस के। फिर उसमें हम यहां पर क्या करा देंगे यहां पर मॉड्यूलस बाय जो भी एरे का साइज है वो, ठीक है, मॉड्यूलस जो भी एरे का साइज चल रहा है उससे हम इसको मॉड्यूलस करा देंगे। तो ये जो हमारे इंडेक्स है ये यहां पर कन्वर्ट यहां पर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें कन्वर्जन देख रहे हो, ठीक है, इसमें 0 से लेके अगर आप देख रहे हो तो 5 तक इंडेक्स है, ठीक है, 0 से लेके 5 तक यहां पर इंडेक्स है। इसमें हम k को जोड़ते चले जाएंगे और n से हम इसमें मॉड्यूलस करते चले जाएंगे। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसे ही देखो, सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो जोसेफस फंक्शन में हमने n पास कर दिया, k पास कर दिया। अगर पूरे एरे में अगर पूरे एरे में हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट बचा, ठीक है, एक ही एलिमेंट बचा, ठीक है, तो 0 हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट हमारे पास बच रहा है तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 तो इंडेक्स होगा, राइट। तो वो हमने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया, ठीक है। जो हमारा आंसर है वो 0 ही तो होगा, अगर एक ही एलिमेंट हमारे पास बच रहा है, 0 तो इंडेक्स होगा, ठीक है। अगर अगर ठीक है, अगर अदरवाइज हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवा रहे हैं, जोसेफस n-1 के, ठीक है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर सॉल्यूशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एरे का साइज है वो एक कम हो रहा है क्योंकि एक डिलीट होता चला जा रहा है, ठीक है। सो हमने अपने फंक्शन में n-1 पास कर दिया, ठीक है, k का k पास कर दिया, ठीक है। और जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें उसको अगर हमें ओरिजिनल वाले में कन्वर्ट करना है, अभी हमने सीखा था फॉर्मूले से, तो वो कैसे होगा, जो भी सॉल्यूशन है उसमें हमें करना है प्लस के, ठीक है, प्लस के, और मॉड्यूलस बाय हमें किससे करना है, एन, मॉड्यूलस बाय किससे करना है, एन। तो जैसे ही हम ये करेंगे, अभी हमने ये जो सीखा था कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्लस के करके मॉड्यूलस बाय एन कर देंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल इंडेक्स है ना सर्कुलर वे में, वो हमारा आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारा अदरवाइज हम यहां पर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो n-1 कॉमा के, तो ये इसको हम बोल रहे थे ये x है हमारा, इस x में हम क्या जोड़ देंगे, k जोड़ देंगे और मॉड्यूलस बाय कर देंगे n से, तो हमारा जो भी ओरिजिनल इंडेक्स है ये उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये हमें बेसिकली करना था एंड इस प्रकार से हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे अभी अगर आपने देखा तो हमने ये चीज करी थी, राइट। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 0 3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो 0 3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, 0 + 3, क्योंकि k की वैल्यू क्या थी 3, मॉड्यूलस बाय k, n का साइज क्या था 7, तो 3 मॉड्यूलस बाय 7, आंसर हमारा क्या आ गया, इसमें 3 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 4 में कैसे कन्वर्ट हुआ, 1 + 3 मॉड्यूलस बाय 7, तो कितना हो गया 4 मॉड्यूलस बाय 7, आंसर कितना आ गया 4। फिर 3 सॉरी 2, सो 2 + 3 मॉड्यूलस बाय 7, तो 2 किस में कन्वर्ट हो गया 5 में, 3 किस में हो गया 6 में। फोर्थ इंडेक्स 0 में कैसे कन्वर्ट हुआ, फोर्थ इंडेक्स 0 में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये ध्यान सुनना, 4 + 3 मॉड्यूलस बाय 7, तो 7 मॉड्यूलस बाय 7 कितना होगा 0, ऐसे। इसलिए जो फोर्थ इंडेक्स था वो 0 में यहां पर कन्वर्ट हो गया और फिफ्थ इंडेक्स 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो अपना फॉर्मूला है वो हमने यहां पर यूज किया है कि जो भी जो जैसे ही हमने एलिमेंट डिलीट किया, जो भी हमारा आंसर आया उसमें हम k जोड़ेंगे और मॉड्यूलस बाय n कर देंगे, ठीक है। बेसिकली n-1 कॉमा k से जो भी आंसर आया, क्योंकि हमने n कॉमा k का सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो हमने बोला n-1 और k का जो भी सॉल्यूशन है उसमें k जोड़ दो और मॉड्यूलस बाय n कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये चीज हमने क्यों करी है। बेसिकली सर्कुलर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज करी है और वही हमने यहाँ पर आंसर में लिखा है। तो बेसिकली रिकर्जन फंक्शन अगर आप देखोगे तो एक लाइन का है और क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेगा, बट थिंकिंग के हिसाब से जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाला है। सो आई होप ये सॉल्यूशन भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 14 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को। और देखो, मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि 20th से यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 14 अप्रैल तक एग्जाम चल रहे हैं। और इतना एफर्ट जितना हमने यूट्यूब पर डाला है फ्री कंटेंट के लिए, अगर आपको कहीं भी मिल जाए किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर तो मुझे बता देना, बिकॉज एक भी शिफ्ट हमने नहीं छोड़ी है जिसका सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पे अपलोड ना किया हो। सारे एग्जाम्स के कोडिंग के सॉल्यूशन हमने चैनल के ऊपर अपलोड करे हैं। और अगर आप लोगों को, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, बट इस चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, जो भी आप कर सकते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, देखो मैं एग्जाम नहीं दे रहा, बच्चे जो बताते हैं ना, मैं उस बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, राइट। मुझे नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, राइट। एंड दूसरे चैनल करवा भी नहीं सकते सॉल्व, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं आते क्वेश्चन सॉल्व। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे लास्ट में जो सॉल्यूशन अपलोड किया था एमएसटी वाला, वो खुद ही नहीं समझा पाएंगे उसको, तो वो बच्चों को क्या ही सॉल्व करवा पाएंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, कुछ जो भी आपका मन है। बाकी अगर आपका एग्जाम आने वाला है टीसीएस का, सो यू कैन परचेज अवर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इट विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू। ये जो लाइव टेस्ट है, अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट ये लाइव टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपका एग्जाम आने वाला है, कोर्स काफी बड़ा है, अगर आप सारे टेस्ट नहीं दे पा रहे तो सब कुछ भूल जाओ, ये जो लाइव टेस्ट है ना ये देके जाओ और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आपका अप हो जाएगा। ये जो लाइव टेस्ट है ना ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। सो लिंक ऑफ दिस TCS NQT mock test series will be in the description, which you can purchase if you have your exam in the upcoming time. Okay, so let's start. ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। जितना बच्चों ने बताया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, योर टास्क इज टू सॉर्ट द एरे यूजिंग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, ऑलवेज चूज द लास्ट एलिमेंट एज द पिवट ड्यूरिंग ईच पार्टीशन स्टेप, प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द पिवट आफ्टर प्लेसिंग इट इन करेक्ट पोजीशन, फाइनली प्रिंट द सॉर्टेड एरे। पहले इस क्वेश्चन को समझ लो एक बार। देखो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एरे दिया हुआ है, मैं, ठीक है, सपोज 1 6 9 8 7 3 एंड 2 एंड 5, सपोज ये एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस एरे को हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। अब ये बात क्यों बोल रहे हैं कि भैया पिवट को तुम्हें प्रिंट कराना है? सिंपल सा रीजन है, टीसीएस का कंपाइलर हर कोई, जो जितने बच्चे कोडिंग करेंगे, क्या वो इंडिविजुअली चेक करेगा कि बच्चे ने क्या कोड किया है? अगर किसी ने डायरेक्ट सॉर्ट फंक्शन लगा दिया तो आउटपुट तो सेम ही आ जाएगा ना। अगर उन्होंने बोला कि क्विक सॉर्ट से सॉल्व करवा दो इस क्वेश्चन को, तो आपने क्विक सॉर्ट यूज कर दी, और हो सकता है आपने नहीं करी। अगर नहीं करी तो उनको कैसे पता पड़ेगा? हर किसी का कोड थोड़ी चेक कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक छोटी सी चीज लगा दी कि भैया एक तो लास्ट एलिमेंट को आप लेना पिवट, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए आपको कस्टम करना पड़ेगा अगर आप फंक्शन भी यूज कर रहे हो। एंड दूसरी चीज उन्होंने बोल दी कि भैया पिवट का इंडेक्स प्रिंट कराओ। अब ये आप नहीं कर सकते सॉर्टिंग फंक्शन के साथ कि आप पिवट का जो पिवट एलिमेंट जो बनेगा उसका आप करेक्ट इंडेक्स प्रिंट करवा पाओ। उसके लिए आपको क्विक सॉर्ट लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक सॉर्ट समझ लेते हैं, क्विक सॉर्ट किस पे चलती है, क्या होती है। पहले क्विक सॉर्ट को समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से क्विकली समझा देंगे अपन। डिवाइड, ठीक है, डिवाइड वाले रूल पे चलती है कि आपको पार्टीशन करना है, ठीक है। और कैसे चलती है कि आपका जो एरे है वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन पिवट। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमें पिवट लेना है। अब अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो डिवाइड के एल्गोरिथम पे चलती है, डिवाइड एंड कॉन्कर के। अब इसमें जब ये इस एल्गोरिथम पे चल रही है, अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल इन लोगों ने बोला कि लास्ट एलिमेंट को अपन पिवट लेना, तो लास्ट एलिमेंट को अपन पिवट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने 5 पिवट ले लिया, 5 पिवट हो गया। तो क्विक सॉर्ट का मेन पर्पस क्या है? क्विक सॉर्ट का मेन पर्पस ये है कि आप जो भी पिवट ले रहे हो, पास एक के बाद जब एक पास चलेगा वो अपनी करेक्ट पोजीशन में होगा, बाकी एरे गया भाड़ में। बाकी एरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी पिवट एलिमेंट आपने चूज किया है एक पास के बाद वो अपनी करेक्ट पोजीशन में होगा। मतलब जो ये 5 है, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो हो सकता है कि सॉर्टेड ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो उससे छोटे होंगे। और जो 5 के राइट साइड में एलिमेंट होंगे वो 5 से बड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 को पिवट लेता हूं तो हो सकता है कि मेरा जो एरे है वो कुछ इस प्रकार से दिखे। सपोज मैंने 5 को पिवट ले लिया, सो कुछ एरे हमारा ऐसे दिख रहा है कि 5 यहां पे आ गया, फिर 2 1 3, सपोज ये आ गया, यहां पर 5 आ गया, और 5 के बाद आ गया हमारा 8 7 9, ठीक है। सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये एरे सॉर्टेड है? नहीं। बट इसमें एक चीज फिक्स हो गई कि भाई 5 के जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट हैं वो सारे
पांच से छोटे हैं और पांच के राइट साइड वाले जो एलिमेंट है वो पांच से बड़े हैं। मतलब पांच अपनी राइट पोजीशन पर आ गया एक पास के बाद। और उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि पांच अपनी राइट पोजीशन पे है। अब ये सेम एल्गोरिथम हम यहां पर चला देंगे उसके लेफ्ट पार्ट पर और राइट पार्ट पर, मतलब लेफ्ट पार्ट पर भी सेम एल्गोरिथम चल जाएगी और राइट पार्ट पर भी सेम एल्गोरिथम चल जाएगी। तो अब जो क्विक सॉर्ट का फंक्शन है वो चलेगा 2 1 3 पर लेफ्ट पार्ट के लिए एंड 8 7 9 पर। अब इसमें जो पिवट है 2 1 3 में वो क्या हो जाएगा, सपोज 3 हो गया तो क्योंकि लास्ट एलिमेंट लेना है तो 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। बाकी जो लेफ्ट एलिमेंट है वो उसके छोटे रहेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए दोनों ही छोटे हैं 3 से, तो 3 अपनी ऑलरेडी राइट पोजीशन पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 3 राइट अप की पोजीशन में है तो आपको पता है राइट साइड वाला जो एरे है वो तो काम करेगा ही नहीं, लेफ्ट साइड वाला एरे जो है वो यहाँ पर काम करेगा एंड वो 2 और 1 होगा। 2 और 1 के बाद अगर आप इसको सॉर्ट करोगे मल्टीपल पार्ट्स में तो इसमें 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 तो अपनी ऑटोमेटिकली करेक्ट पोजीशन में था ही, तो यहाँ पर जो है वो ये रिटर्न होके क्या बन जाएगा 1 2 3 और लास्ट में ये 5। तो ये जो लेफ्ट पार्ट है ये पूरा सॉर्ट हो गया। सो बेसिकली ये जो रिकर्जन फंक्शन है ये अपना काम करता रहेगा। इसी प्रकार से राइट साइड में भी ये पूरी एल्गोरिथम वर्क करेगी। तो ऐसे क्विक सॉर्ट चलती है। अब ये जो पिवट एलिमेंट का जो हम पार्टीशन कर रहे हैं ये कैसे वर्क करता है इसको समझ लेते हैं। एक बार इसको समझ लिए तो क्वेश्चन ऐसे अपन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये एरे अपना दिया हुआ है 1 6 9 8 7 3 2 5 सपोज फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो पिवट एलिमेंट है ये अपनी पोजीशन पे आएगा कैसे, ठीक है, कैसे आएगा, लेफ्ट साइड में इसके छोटे एलिमेंट्स कैसे आएंगे, राइट में बड़े कैसे आएंगे, उसको समझ लेते हैं। तो देखो इसकी बहुत ही सिंपल सी एल्गोरिथम है कि एक आप आई पॉइंटर बना लो, ठीक है, एक आई पॉइंटर बना लो और उसको अपन इस पोजीशन से चलाएंगे। इस पोजीशन से अभी हम मान के चल रहे हैं कि पांच से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं है, पांच से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आई पॉइंटर तब तब इंक्रीज करेगा जब पांच से कोई छोटा एलिमेंट होगा, मतलब जो भी पांच से छोटे एलिमेंट होंगे ना वो आई पॉइंटर के साथ चलेंगे। और जे पॉइंटर ये जो है ना ये पॉइंटर चलेगा बड़े एलिमेंट्स के लिए। ध्यान से सुनना, आई क्या है, छोटा है। अल्फाबेट्स में भी अगर आप काउंट करोगे तो आई छोटा है, जे बड़ा है, ठीक है। तो आई पॉइंटर जो भी पिवट एलिमेंट है उससे छोटे एलिमेंट्स के लिए चलेगा और जे जो है वो उससे बड़े एलिमेंट्स के लिए चलेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो रन करेगा ना पॉइंटर वो हमेशा जे करेगा। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं कैसे होता है। तो जे पॉइंटर हमारा सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेगा, तो जे सबसे पहले इस पे आया, ठीक है। अब जे हमारा सबसे पहले इस पे आया, इसने क्या देखा, इसने बोला कि भैया 1 क्या है, 5 से छोटा है या बड़ा है। हमेशा ये चीज चेक होगी कि जो भी पिवट एलिमेंट है उससे करंट एलिमेंट छोटा है या बड़ा है। अगर एलिमेंट छोटा है तभी हमें कुछ एक्शन लेना है, अगर एलिमेंट बड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली अपने जे पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर एलिमेंट छोटा है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, उसको हम स्वैप कर देंगे बाय आई प्लस प्लस वाला एलिमेंट। तो फिलहाल के लिए आई तो अभी अपना इस यहां इनिशियल में है, जे हमारा पॉइंट कर रहा है 1 पे, तो 1 को किससे स्वैप कर देंगे, 1 को 1 से ही स्वैप हो जाएगा क्योंकि आई प्लस प्लस से हमें स्वैप करना है। तो 1 1 से ही स्वैप हो जाएगा, तो 1 यहीं पर रहेगा, ठीक है। और आई पॉइंटर इंक्रीज होकर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और जे पॉइंटर हमारा अब आगे फिर से चलेगा, तो जे पॉइंटर आया यहां पर। अब जो 6 है वो क्या 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमें कुछ भी नहीं करना, जे पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे। फिर जे पॉइंटर आ गया 9 पे, क्या 9 5 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे बड़े एलिमेंट आते चले जाएंगे तो जे पॉइंटर अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आ गया। अब क्या 8 5 से बड़ा है, हाँ जी 8 5 से बड़ा है, जे पॉइंटर को फिर से बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर आप अभी करंट स्टेट में देख रहे हो तो आई और जे पॉइंटर क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। आई पॉइंटर जहां पर है उतने एलिमेंट अभी 5 से छोटे हैं। अगर आप देखोगे तो आई पॉइंटर अभी इसी पॉइंट पर है और अभी एक ही तो एलिमेंट आया है जो 5 से छोटा है, तो आप देख लो आई उस पर खड़ा है। और जे कहां पर खड़ा है, जे कहां पर खड़ा है, जितने एलिमेंट उससे बड़े हैं वहां पर जे पॉइंटर खड़ा है, तो ये हमेशा यहां पर रहेगा, ठीक है। अब आया 7, 7 क्या 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमें कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़ाया जे पॉइंटर। अब आ गए 3 पर, अब आया इंपॉर्टेंट काम। 3 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो 3 5 से छोटा है। अगर 3 5 से छोटा है, पिवट एलिमेंट से छोटा है, तो हमें क्या करना है, आई प्लस प्लस से स्वैप करना है। मतलब आई यहां पर है, आई प्लस प्लस मतलब ये एलिमेंट हो गया, इससे स्वैप हो जाएगा। तो ये जो 3 है ये यहां पर आ जाएगा, तो 3 हमारा यहां पर पहुंच गया और 6 हमारा यहां पर हो गया, ठीक है। और अब जो हमारा जे है वो फिर से इंक्रीज होगा और हमारा आई यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, तो अब आई इसको पॉइंट कराने लगेगा और जे इसको पॉइंट कराने लगेगा। अब हम आए 2 पर, ठीक है। तो क्या 2 5 से छोटा है या बड़ा है, तो 2 भी 5 से छोटा है, तो आई प्लस प्लस से स्वैप हो जाएगा, मतलब इस जगह से स्वैप हो जाएगा, तो 2 यहां पर आ जाएगा। तो 2 यहां पर आ गया, तो 9 यहां पर आ गया, तो 9 यहां पर आ गया, ठीक है। एंड अब अगर आप देखोगे तो हमारा जो एरे है वो कैसा देखने को मिल रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमारा एरे कैसे देखने को मिल रहा है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं और इसी से आपकी जो क्विक सॉर्ट है वो क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
इसको एक बार चेक कर लेते हैं अब हमारा एरे कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर हमें दिख रहा है 1, फिर यहां पर दिख रहा है 3, फिर दिख रहा है 2, उसके बाद दिख रहा है हमें 8, फिर दिख रहा है 7, और फिर 7 के बाद हमें दिख रहा है 6, फिर दिख रहा है 9 और दिख रहा है 5, और पिवट एलिमेंट है हमारा 5। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारा लूप खत्म हो गया, दो पर हमारा लूप खत्म हो गया। ठीक है, अब जो हमारा पिवट एलिमेंट है ना उसको हम स्वैप कर देंगे बाय आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस से स्वैप कर देंगे, तो आई पॉइंटर कहां था, इस जगह पे खड़ा है आई पॉइंटर, राइट। आई प्लस प्लस मतलब 8, इस जगह से स्वैप हो जाएगा 5। तो अब अगर हमारा एरे आप देखोगे तो एक राउंड के बाद हमारा जो एरे है वो कैसा दिख रहा है, 1 3 2 5 7 6 एंड 9। हमारा एरे कुछ अब इस प्रकार से दिखेगा और 8 यहां पर आ जाएगा। हमारा एरे अब इस प्रकार से दिख रहा है। अब इस एरे को जरा ध्यान से देखो, 5 के जो लेफ्ट साइड में है वो सारे 5 से छोटे एलिमेंट है, और 5 के राइट साइड में जो है वो 5 से बड़े एलिमेंट है, और 5 अपनी करेक्ट पोजीशन में आ चुका है। तो ये क्विक सॉर्ट का काम है। अगर आप देख सकते हो तो 5 अपनी राइट पोजीशन पे आ चुका है। सेम एल्गोरिथम हम लेफ्ट साइड पे वर्क करेंगे, सेम एल्गोरिथम हम राइट साइड पे वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन में तो यही करना है, और बाकी हमें क्या करना था, पिवट का इंडेक्स प्रिंट कराना था। तो अगर आप देखोगे तो इसमें इंडेक्स क्या प्रिंट हो जाएगा, अगर अभी आप 5 का इंडेक्स देखोगे तो 5 का पिवट का जो इंडेक्स है वो क्या प्रिंट हो जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि ड्यूरिंग ईच पार्टीशन स्टेप, ओके, प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द पिवट आफ्टर प्लेसिंग इट इन इट करेक्ट पोजीशन। ठीक है, तो पिवट का जो भी इंडेक्स है वो आप यहां पर अब प्रिंट कर दोगे। तो प्रिंट, तो यहां पर पिवट का जो इंडेक्स है वो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3, तो 3 प्रिंट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका अब जो नेक्स्ट पिवट है वो यहां पर क्या होगा, इस वाले एरे के लिए क्या होगा 2, क्योंकि यही तो अब लेफ्ट साइड वाला एरे बचा, इतना वाला 5 तो अपनी राइट पोजीशन पे आ गया, और इस वाले एरे के लिए पिवट एलिमेंट क्या हो गया 8। अब इसके हिसाब से एल्गोरिथम वर्क करेगी। तो ये हमारा चलती चलेगी, पिवट्स को हम प्रिंट कराते जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी एल्गोरिथम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिवट को हम लास्ट एलिमेंट से असाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो भी एरे है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 9 8 जो भी अपना एरे है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पिवट लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था। आई को हम लो -1 से इनिशिएट कर देंगे। लो -1 मतलब जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एक पहले, यही तो डिस्कस किया हमने। तो आई हमारा वो पॉइंट आउट कराने लगेगा। जे हमारा लो से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, हाई तक, जे प्लस प्लस लूप चलेगा हमारा। इफ द एलिमेंट इज लेस देन पिवट, यही तो डिस्कस किया था, हमारा जे पॉइंटर प्लस 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 होता चला जा रहा है। ठीक है, इफ द एलिमेंट इज लेस देन पिवट, यही तो हम तब से डिस्कस कर रहे थे। अगर एलिमेंट छोटा है तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे और स्वैप कर देंगे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को। यही तो कर रहे थे हम, आई प्लस प्लस करके नेक्स्ट एलिमेंट से स्वैप ही तो कर रहे थे। तो सेम चीज करिए जो मैंने आपको समझाई। लास्ट में जब ये पूरा लूप ऐसे चल जाएगा उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि हमारा जो लास्ट में है जो पिवट है उसको हम स्वैप कर देंगे। तो लास्ट में हमने अगर आप देख सकते हो पिवट को स्वैप कर दिया विद आई प्लस वन इंडेक्स। यही तो हमने डिस्कस किया था, लास्ट में पिवट को आई प्लस वन से अपन क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, और जो पिवट का इंडेक्स है वो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो पिवट का इंडेक्स क्या हो गया, आई प्लस वन, ये पिवट का इंडेक्स हो गया। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे आई प्लस वन, क्योंकि इसी के बेसिस पर तो अब जो नेक्स्ट पार्टीशन है वो होगा, राइट। सो आई प्लस वन हम रिटर्न करा देंगे। तो अगर आप देख सकते हो तो ये हमारा पार्टीशन हो जाएगा। पार्टीशन से हमें पिवट का इंडेक्स मिल जाएगा, और उस पिवट के इंडेक्स से हम दोबारा से लो से लेके हमारा जो लूप है वो कहां तक चलेगा, पिवट -1 तक, एंड पिवट +1 से चलेगा हाई तक। तो इससे हमारे जो आगे की क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है वो यहाँ पर परफॉर्म होती रहेगी रिकर्जन के थ्रू, राइट। एंड ये ही हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हमने सिंपली अपना एरे लिया है, क्विक सॉर्ट फंक्शन में अपना पास किया है, लास्ट में हम एरे को प्रिंट करवा देंगे, सिंपल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड मैंने कोशिश करी है स्मूथली समझाने की जिससे आपको दिक्कत ना आए। बाकी कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज की। इफ यू हैव योर एग्जाम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।